मेजर क्रिकेट लीग के तीसरे मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत या ग्राउंड में मौजूद तमाम शायकीन क्रिकेट, मैक टीवी के तमाम नाजरीन और जो लोग भी हमारी ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, आप तमाम लोगों को हाफिजाबाद क्रिकेट स्टेडियम से खुशामदीद कहता है। आज इस पहले मैच में, मैं पहला मैच इसलिए कह रहा हूं कि कल दोनों मैचेस जो खेले गए थे वो बारिश की नजर हो गए थे, लेकिन आज एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला कराची शार्क और हैदराबाद जैगवार्स की टीमों के दरमियान। और एक बड़े टारगेट को चेस करने की जानिब हैदराबाद जैगवार्स की टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंदाज से आगे बढ़ी थी, लेकिन एंड ऑफ द डे एक्सपीरियंस आतिफ मकबूल कराची शार्क के कैप्टन और उनकी टीम ने दिखाया। और इस मैच में जो तीसरा मैच था, कराची शार्क ने हैदराबाद जैगवार्स को 14 रन से शिकस्त देकर शानदार कामयाबी हासिल की। वेरी वेल प्लेड कराची शार्क्स। हमारे साथ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड एंड द टूर्नामेंट डायरेक्टर ऑफ दिस MCL मेजर क्रिकेट लीग हसन रजा। उनके साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद उमर और उनके साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सेक्रेटरी मुबशर हुसैन प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हमारे साथ मौजूद हैं। आज इस मैच में कई नोटेबल परफॉर्मेंसेस देखने को मिली, जिसमें लाहौर कलंदर्स का वो सितारा के जिसने धूम मचाई आने के बाद और अपनी टीम की फतह में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लाहौर कलंदर्स को टाइटल जिताने में आज ताहिर बेग ने बड़ा इंपैक्ट यहाँ शो किया। बहुत सारी तालियां ताहिर बेग के लिए होनी चाहिए कि जिन्होंने 52 रन 32 बॉल्स पे स्कोर किए विद 7, 4 एंड 3 सिक्सेस। उनके साथ सुलेमान ने शानदार बैटिंग की, 52 ऑन 33 बॉल्स विद 3 सिक्सेस एंड 3 फोर्स। जहांजेब ने एंड ऑफ द डे बहुत एफर्ट किए हैदराबाद शार्क के लिए, 38 रन स्कोर किए, लेकिन वो खिलाड़ी जिसने बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट में शानदार अंदाज से परफॉर्म किया, राजपूत तो परफॉर्म करते ही है। दानियाल राजपूत मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने आज 24 रन देकर 4 विकेटें हासिल की और उनके साथ 38 रन भी स्कोर किए। दानियाल राजपूत वेरी वेल डन। हसन रजा और मोहम्मद उमर दानियाल राजपूत को मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी देते हुए। दानियाल जरा कुछ हमसे भी बात करके जाए, वो सामने कैमरा आपको देख रहा है, जरा सीधे होके हम बात करेंगे ताकि देखें तो सही ना दानियाल को दो राजपूत बातें कर रहे हैं। दानियाल वैसे जो अरेंजमेंट्स आपको दिखाई दिए या मेजर क्रिकेट लीग में MCL में और खासकर आप यंगस्टर्स को जो खेलने का मौका मिल रहा है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सब यंगस्टर के लिए कि यहाँ पे आए ना परफॉर्म करें। मैक भाई का बहुत सारा शुक्रगुजार है, हम सब क्रिकेटर जो उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म दिया परफॉर्म करें। जितने भी करना मैं 3, 4, 5 प्रीमियर लीग कनाडा है, US ओपन है, उसमें पार्टिसिपेट करें अच्छा यहाँ परफॉर्म करके। मजा आया आज जो कंडीशन थी, एक दिन पहले इतनी बारिश थी, लेकिन जो ग्राउंड स्टाफ ने और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने एफर्ट करके आज खेलने के काबिल बनाया। बिल्कुल ग्राउंड स्टाफ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम, इस ग्राउंड को इस काबिल बनाया खेलने के। विकेट अच्छी थी बैटिंग के लिए, फिर आखिरी में भी रन चेस हो रहे थे, बस वो थैंक यू करते हैं ग्राउंड स्टाफ का। थैंक यू दानियाल राजपूत, आई विश यू अ वेरी गुड लक फॉर द नेक्स्ट मैचेस। तो फिर थैंक यू वेरी मच हसन रजा, मोहम्मद उमर एंड राना मुबशर हुसैन। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इतना ही, और आज का दूसरा मैच जो खेला जाएगा आपको ज्वाइन कर रहे हैं उसके टॉस पर।
concentrating. Nicely bowled and equally well played. Good cricket all round. Yeah, one thing is for sure, Hassan, what we have observed so far on this track, there is something for everyone. As a bowler, if you can manipulate the surface with good lines and good lengths, you have something for you. And as a batter, if you can wait for the bad deliveries to come and then try to expand, then you have something for you as well as a batter. Just like that. Wait for a bad ball, put that away. Oh, fine leg. A maximum. First boundary of the innings for Lahore Lions. अच्छा शॉट खेला, ये ऑन साइड पे बॉल की और भरपूर फायदा उठाया बैट्समैन ने, इसको फ्लिक करने की कोशिश की, 6 रन हासिल किए। यही वो क्वालिटी बॉलिंग और बैटिंग है, टैलेंट हंट प्रोग्राम में MCL की जो नजर आ रही है हमें। वेट फॉर द बॉल, गिव हिम टू रिस्पेक्ट फॉर द बॉलर, देन हिट हार्ड एनीवेयर, लाइक काइंड ऑफ फ्लिक शॉट और मिड ऑन और मिड विकेट। Well, that was more of a gift from the bowler because he has predominantly offside field, only one man controlling the fence at square leg boundary, and it was on the pads asking for punishment, and the batter made the most of it. बहुत ही अच्छी पिच देखने में आ रही है आज मैच में। 190 रन बने पहले मैच में और दूसरा मैच में देखना होगा कि क्या स्टार्ट लेते हैं। ओवर ड्राइव खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ की तरफ बाहरी किनारा लेती हुई बॉल गई थर्ड मैन की तरफ, 1 रन हासिल किया। ओवर थ्रो का रन बन सकता था मगर 1 रन हासिल किया बैटर्स ने अत्ता क्रिकेट अकेडमी। Well, I don't like this approach from the captain, Hassan. We don't have a slip in place earlier on just with the start. You got to have at least one slip just to let the batters know that you are here for some business. You can attack. You are coming at them. Just let them feel. अच्छा बॉल लेग स्टंप पे था, ये अपील की है, विकेट लेग बाय का रन देखना होगा, अंपायर का इशारा लेग बाय का। थोड़ा सा इंस्विंग बॉल नजर आया ये और फ्लिक करना चाहते थे इसको, 1 रन हासिल किया। End of the first over. It's 9 without loss of wicket. Lahore Lions after losing the toss. अगेन क्रेडिट जाता है जितने भी यहाँ पर हाफिजाबाद में सपोर्टर्स और स्पेशली ग्राउंड स्टाफ को, जो कि 2 दिन की बारिश के बाद ये मैच सुपरवाइज करवाया, सेकंड मैच MCL का। Well, Hassan, is it a trend in Pakistan or what? Earlier on, just 5 minutes before, I've heard the news that in the third ODI against Pakistan in Karachi, New Zealand have won the toss and opted to bowl first. Is it a trend? चल रहे पाकिस्तान में अब तक टॉप बैट्समैन अगर देखें तो बिटवीन पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही है। ऑलमोस्ट फखर जमान, अमेजिंग, सरपासिंगली इन फॉर्म बैट्समैन पाकिस्तान कंटिन्यू रन्स किए हैं और जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान की बैटिंग पैराडाइज पिचेज हैं, होम सीरीज का एडवांटेज उठाते हुए हमारे बैटर्स पाकिस्तान के। So it's going to be Ayan Gul who is going to share the attack. And good to see a slip in place. Have they heard our call? ऑफ स्टंप ये बॉल की पहला बॉल था अलियान का और ये ड्राइव करना चाहते थे मगर मिस हुई, बाहरी किनारा ले सकती थी बैट का मगर अच्छा बॉल था ऑफ स्टंप। Now there was a rip-on offer for the batter. Couldn't reach that and the bowler was trying to bowl full, searching for the swing if there is any available. We haven't seen anything extravagant in terms of the swing, the bilateral movement. अच्छी बॉल, इसको पंच किया बैकफुट पॉइंट पे, डीप थर्ड में पहला रन तेजी से लिया, दूसरा रन के लिए वापस मुड़े। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैन के दरमियान। यही वो प्रेशर होता है फील्डर पे डालने का बैटर्स की तरफ से कि पहला रन तब तेजी से लेंगे आप तो दूसरा रन ले सकते हैं और मिसफील्ड हुई फील्डर से थर्ड मैन की तरफ।
Well, Islamabad Tigers need to do their homework in their fielding. Earlier on with the start, right of the first ball, we've seen a misfield, and here was a misfield at the third man boundary, which cost an extra run. तेईस से लिए डायरेक्ट हिट लगेगी स्टंप्स पे अगर ये रन आउट होता है बैट्समैन, मगर मिसफील्ड हुई डीप एक्स्ट्रा कवर पे, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर थे और मिसफील्ड हुई, वन हैंड से बॉल को पिक करने की उसकी, मगर नाकाम रहे. बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैन के दरमियान. Good batting, I would say, because in the 30-yard circle, when you see that the batters are going hard at the bowling, then you have your players right on the edge of the circle, and there is always an opportunity for a quick single. So if you can manipulate the field as a batter, this is something positive in my opinion. So it's a good start for Lahore Lions so far. They will take it. Very good bowling for these fast bowlers. Very good bowling right on the stop. अच्छी बॉल विद इन द स्टंप बॉल की है, ये भी रन लेना चाहते थे मगर कॉल की. अपनी क्रीज में बैटर वापस पहुंचे, ड्राइव करना चाहते इस बॉल को. लेंथ बॉलिंग की फास्ट बॉलर्स से अब तक दोनों ओवर्स देखे गए, आउट स्विंग और इन स्विंग दोनों का इस्तेमाल होते हुए दोनों बॉलर्स की तरफ से. Well, the bounce, talking about the bounce of this pitch, it has been almost invariable in my opinion. Just a couple of deliveries have kept low. Other than that, it's been coming very nice on the bat. If the good length has been applied by the bowler, then the ball is coming nicely on the bat. शॉट खेला अफसर ऑफ स्टंप, फील्डर से मिस हो गई. ये क्या मिस फील्डिंग हुई, 4 रन हासिल किए और सर ऑफ स्टंप बड़ा अच्छा अंपायर का इशारा, 4 रन. मिसफील्ड अगेन फील्डर से हुई है. जिस तरह से पहले आपने बताया कि पिच का बिहेवियर जो है बड़ा अच्छा इंपैक्ट दे रहा है. आज फर्स्ट डे MCL क्रिकेट लीग में यहां पर 190 रन बने पहली इनिंग में और चेस होने के करीब करीब थे. जहां पर ताहिर बेग की बात की जाए, लाहौर के अंदर के ओपनिंग बैट्समैन, 37 बॉल्स पे 52 रन किए. तो इंपैक्ट नजर आ रहा है पिच का, कि बिहेवियर बड़ा अच्छा है पिच का. Lost it, and lost it miles. That's gone all the way, and we have to see another caution from Sawar Bhatti, the umpire. Typical of his. That is entertaining for the crowd. End of the over, it's 22 with a loss of wicket after 2 overs. ये अच्छा शॉट खेला, इसको लेफ्ट किया और टाइमिंग बड़ी अच्छी थी इनकी. स्टंप्स पे बॉल था, ये मिडिल में ऑन साइड पे इसको अपिच खेले, बेहतरीन शॉट. और यकीनन बैट्समैन को कॉन्फिडेंस आया इस बॉल पे जिसमें शॉट खेला मिडॉन की तरफ से, क्योंकि 2 फील्डर्स पावर की प्ले के जो है आउटसाइड द सर्कल बाहर रहते हैं और भरपूर फायदा उठाया सर्कल में खेलते हुए. अब तक 2 बाउंड्री लगी अता क्रिकेट अकेडमी की बैटिंग लाइनअप में. Well, Hassan, that last 6 gives me an indication for a batter that you can hit through the line on this surface. That was a great example of hitting through the line. He's lofted it easily and safely over mid-on for the maximum, and the timing was exquisite, as it should be. Very good timing. Nice shot. अच्छा बॉल लेग स्टंप पे था. अंपायर का इशारा देखना होगा कि वाइड बॉल होगी, मगर थोड़ा सा लेग स्टंप से ये बॉल पैड पे लगी और फ्लिक होती हुई अंपायर के कीपर के पास गई. अच्छी विकेट कीपिंग, कोई रन हासिल नहीं किया क्योंकि वाइड बॉल नहीं हुई है. ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वाइड बॉल होगी, मगर पैड से भारी अंदर का किनारा लेती हुई गई ये बॉल और यकीनन डॉट बॉल कहलाएगी. Yeah, there was an opportunity for the batter for a leg glance who missed it, brushed the pad in the way through. Driven down the ground and will take a single. Another fumble in the field. You cannot afford these fumbles. You have to be very accurate in your fielding. This is what I was noticing from the start of this proceeding in this first innings. And this is one thing they need to do their work. वेरी इंपॉर्टेंट, फील्डिंग इंपॉर्टेंट है T20 फॉर्मेट में. और जिस तरह से हैदराबाद ने 3 कैचेस छोड़े अपने पहले इनिंग के पहले मैच में, वहां से 190 रन किए कराची शार्क ने.
There's an appeal and umpire is not interested and they scamper through for another leg bye. लेग बाय का इशारा क्रॉस खेलने जा रहे थे उसको ऑन साइड पे थोड़ा सा रिवर्स बॉल नजर आया और अपील की अच्छी मगर अंपायर का इशारा नॉट आउट स्टिल फास्ट बॉलर्स स्टंप्स टू स्टंप बॉल करते हुए नए बॉल पर नंबर 1 स्टंप्स में बॉल करनी चाहिए फास्ट बॉल को जो कि कोशिश करें कि कोई विकेट हासिल हो और बैटर्स जो हैं वो खेल रहे हैं मिडल ऑफ द बैट ऑन साइड पे टीप उसको अलग की तरफ पहले तेजी से लेंगे मिस फील्ड हुई अगेन दोनों बैट्समैन के दरमियान हेजिटेशन हुई मगर स्ट्राइक एंड पे उनको मना किया कि एक रन ही काफी होगा Yeah, just a little bit of drama in the middle. There was a little bit of miscommunication between the batters and a misfield. Misfield has become a habit for these players, Islamabad Tigers. ATTA Academy. But so far so good. Both of the sides will be happy with the start. इस टूर्नामेंट में 6 फ्रेंचाइज की टीम हिस्सा ले रही है मेजर क्रिकेट लीग में कंपटीशन देखने में आ रहा है आज एक और शॉट खूबसूरत शॉट अब शॉट था स्ट्रेट ड्राइव बॉलर बैक ड्राइव खेला शॉट 4 रन हासिल किए क्वालिटी शॉट Well, that was the shot of the day in my book. Down the ground, over the head of the bowler, beating everyone. Safest place to hit a stroke. Beautifully timed. बड़ी परफेक्ट टाइमिंग थी इनकी और पेस के साथ यूज किया और मिडल ऑफ द बैट अब इसके लिए लॉन्ग ऑफ की तरफ से 2 फील्डर्स बाहर हैं अभी ऑन साइड पे लॉन्ग ऑन डीप स्क्वायर लेग Now, what is happening down there? The umpire Sarwabhati has taken the ball and maybe they are not happy with the condition of the ball. We are only into the 3rd over. It's only a start of the proceedings, I would say. And there is something wrong with the ball. I don't know what. Maybe they're deciding to carry on with it. Earlier on, Hassan Raza, my fellow commentator, was pointing out that there was a hint of reverse swing too. And I was surprised because we are quite early in the stage. It's a new ball. It's a relatively brand new cherry, the white cherry. And it is starting reversing. Something amazing, isn't it? बिल्कुल डिफरेंट है और ये बॉल चेंजिंग का कुछ मामला चल रहा है बिटवीन अंपायर एंड बॉलर्स के दरमियान बॉल का शेप डिस्कस करते हुए कि बॉल को कोई डैमेज तो नहीं हुआ है समटाइम बॉल जब स्क्रीन पे जाती है बॉल भी बॉल से लगती है अंपायर का इशारा बॉल का कि बॉल चेंज की जाए उसमें से दोनों अंपायर्स का डिसीजन होगा और बॉल को शेप को देखेंगे अगर मजीद शेप खराब हुआ अर्ली ऑन 3rd ओवर चल रहा है अब तक इनिंग्स का umpires. Now they're asking for a change in the ball because they're not happy, they're not satisfied with this ball. I don't know what happened. Maybe something taken out of ball when it was hit hard. Hitting those poles in between, those fences as well, those iron fences. I don't know where the ball has been stuck. आई थिंक स्ट्रेट जब स्क्रीन पे गया बॉल तो वहां से डैमेज हुआ है जो स्ट्रेट शॉट था लॉन्ग ऑफ की तरफ मस्ट बी चेंज किया 3rd एम्पायर ने बॉल को रेफर किया और ऑन द फील्ड एम्पायर दोनों जिनको 2nd बॉल डिलीवर किया ये वो 4 एम्पायर्स सुपरवाइज कर रहे हैं MCL सीजन 3 वेयर इन Hafizabad. Yeah, Ashraf Bhatti, Sarwar Bhatti, Shaukat, and the senior most, the ICC Elite Panel's umpire, former Test cricketer, Nadeem Roy. It's an honor for all of these players that such great personalities are supervising this contest. It's in the air and it's in the gap too because it will clear the field and the outfield has been stiffy. It's a good work in the deep. I wonder if he has saved the boundary or not, but it's been a good effort nevertheless. But in the end, couldn't prevent the boundary.
but a good effort nevertheless. Boundary to end the over, 3 done. It's 30-32 with all loss of wicket. अच्छी फील्डिंग फील्डर की और 2 रन हासिल किए अता क्रिकेट अकेडमी के बैटर्स ने। अब इस शॉट खेला था एक्स्ट्रा के ऊपर से, बाउंड्री, यस ऑफ कोर्स बाउंड्री, क्योंकि अंपायर ने रेफर किया फील्डर को डाइव मार के कोशिश की थी बॉल रोकने की, मगर 4 रन हासिल किए बैटर्स ने। फास्ट बॉलर्स कोशिश करते हुए कि पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करें, विद इन द स्टंप्स बॉल करें और विकेट हासिल करें, मगर बैटर्स दोनों कोशिश करें कि अच्छा स्टार्ट दें 6 ओवर्स की पावर प्ले के। Ayan goal to continue and starts with the loosener. A wide down the leg side and a beautiful caution of Sarwar Bhatti. Attracts me every time. बिल्कुल बड़ा एक मखसूस है, अच्छा स्टाइल सर्वर भट्टी का और लुक्स लाइक बिली बॉलन न्यूजीलैंड अंपायर। एक और रिवर्स स्विंग बॉल देखने में आया, लेग स्टंप पे बॉल गई थी, लेग स्टंप पे वाइड का इशारा दिया अंपायर ने। बैटर्स फ्लिक करना चाहते इस बॉल को, मगर काफी दूर था उनकी रेंज से ये बॉल। Down the leg side, poor bowling, 5 wides. You can ill afford this. This is very poor from goal. अगेन ये बॉल भी लेग स्टंप पे रिवर्स नजर आया हमें, एक्स्ट्रा जोर लगाने की कोशिश की बॉलर्स ने, इन स्विंग करना चाहते थे मगर 4 रन हासिल किए, ऑलमोस्ट 1 रन वाइड का मिला है। कोई बॉल बगैर किए 5 रन मिले हैं। अता क्रिकेट अकेडमी के बैटर्स को यकीनन अब तक दोनों बैट्समैन बड़े कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं। वेट फॉर द लूज बॉल और वेट फॉर द रन्स। Good to see some sort of crowd building up in this MAQ cricket ground, Hafizabad. Such a beautiful environment of cricket. Down the leg side, there was a noise, but umpire says you have to re-bowl that 3 wides on the trot. Now he's lost his line-up control, which is going to be not helpful for his cause. Of course, 9 रन दे चुके हैं अपने बॉलर्स अपने इस ओवर में, स्टिल इन बॉलर पे 5 रन एक्स्ट्रा के, जिसमें वाइड भी शामिल हैं, इसके बाद वाइड्स हुई हैं और बाउंड्री भी मिली है। अब तक अगर देखा जाए तो बॉलर की लाइन और लेंथ बरकरार नहीं रख पा रहे बॉलर्स, इन स्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं। Flicked away beautifully using all the pace of the bowler into the boundary for 4. This is a poor stuff from goal. He has to change his line certainly, because this line is not going to yield fruit, what we have seen so far. Now a little bit of coverage of the clouds in the sky. It always a threat, I would say, because yesterday we've been feeling I would say the danger of these clouds. It's been drizzling throughout the course of the day yesterday, and now it's been good so far, I would say, literally, because today we have seen sunshine on most part of the day, and now just a little bit of clouds starting to build, which is not a good sign for a cricketing perspective. यस फलक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्लाउड आते नहीं मगर बारिश ना हो, क्योंकि 2 दिन बारिश हुई है कंटिन्यू। अभी क्रिकेट का मौसम और सीजन भी है, तो मेरे ख्याल में कंटिन्यू क्रिकेट होनी चाहिए। अगेन बॉलर्स, एक और वाइड बॉल लेग स्टंप पे, रिवर्स स्विंग दोबारा देखने में आई और ऑलमोस्ट रिवर्स स्विंग जो है वो मिडिल ऑफ द स्टंप होती है, मगर आउट ऑफ द एरिया जाके बहुत ही छोटे स्टंप से ये बॉल गुजरा और यकीनन वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। Well, Hassan, I feel for this youngster Ayan Gul. He needs to learn something from the great Umar Gul, who has been exponent of reverse swing in the late overs and those bulldozers, as we call them, those Yorkers. Maybe he's trying the same thing. Yeah, this is what he's trying to do. Only this time gets, oh my gosh, you gotta be kidding me. I don't like those misfields.
When your bowler is always already at the receiving end and you can provide him with this kind of misfield, you are always going to push him further into the deep dig, I would say. जी हाँ फलक बिल्कुल जब बॉलर की लाइन और लाइन ऐसी प्रकार ना रहे तो फील्डर्स को भी साथ देना चाहिए बॉलर का और 2 रन हासिल किए अतः क्रिकेट अकेडमी के बैटर्स ने स्टिल प्रेशर डालते हुए बॉलर्स पे और फील्डर्स पे Flicked away, beautifully timed. What about that? Earlier I was saying a straight down the ground stroke was the shot of the day. What about that? This is something out of the box. अच्छा पिक किया है शॉट और मिडल ऑफ द बैट एक मिनट की तरफ खूबसूरत शॉट 6 रन हासिल किए काफी एक्सपेंसिव ओवर ये लग रहा है लाहौर की तरफ से बॉलर्स का बॉडी लैंग्वेज जो है काफी गिरी फील्डर्स की और बॉलर्स की जो कि नजर आ रही है ऑन फील्ड दोनों बैट्समैन ओपनर्स एक अच्छा टारगेट सेट करते हुए अता क्रिकेट अकेडमी की तरफ से Oh my God, he's effortlessly flicking the ball all the way for the maximum. The sixes are not hard to come by. This is what Usama, the batsman, is all about it. He's kept the umpire busy as well in this over. बिल्कुल वेरी गुड शॉट और अंपायर काफी बिजी रहे इस ओवर में वाइड बॉल हुई बाउंड्री का इशारा किया उसके बाद वाइड बॉल पे 4 रन डीप उसको लेग पे मिले उसके बाद फ्लिक किया फिर ऑन की तरफ एक और ये 6 रन बैटर्स ने हासिल किए और कैप्टन जो है वो अपने बॉलर्स को समझाते हुए कि फील्ड प्लेसिंग में चेंज करें डीप उसको लेग पे फ्लिक किया अच्छा शॉट खेला 6 फील्डर्स ऑफ साइड पे रखे हुए थे अपने बॉलर्स ने एक फील्डर ऑफ साइड से निकाल के डीप मिड की तरफ लेके गए और फिर शॉर्ट मिड की तरफ ये फील्डर लेके आए Oh my God! Through the onside, to the offside, it's been an exhibition of stroke play in this over. Earlier, the bowler was losing his lineup control, was throwing wides, and now it's Usama's show with the bat. He's making him pay for his poor bowling. 31 so far in this over and a ball to come. बॉल रहती है और जिस तरह से अता क्रिकेट अकेडमी खेल रही है कमाल की बैटिंग वेट फॉर द लूज बॉल कोशिश कर रहे हैं कि शॉट्स खेलते रहे ग्राउंड के चारों तरफ लेग स्टंप पे शॉट खेले फिर ऑफ स्टंप पे शॉट खेला अगला बॉल कहां खेलते हैं ये बैकफुट पे पंच किया था इसको थर्ड मैन अंदर लिया सर्कल में कोई रन हासिल नहीं किया काफी एक्सपेंसिव ये ओवर लाहौर की तरफ से देखने में आया A dot ball to end, but the most expensive over of the MCL 3 so far. 31 run off that over. It's 63 without loss of wicket after 4. आई थिंक बॉलिंग में कुछ चेंजेस होगी लाहौर के कैप्टन कोशिश करेंगे यहां पर ब्रेक थ्रू हासिल करें कॉलेज एंड की जानिब से बॉलिंग में चेंजेस की जा रही हैं ओवर द विकेट राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करेंगे क्या ये यहां पर ब्रेक थ्रू ले सकते हैं क्योंकि स्कोर बढ़ता हुआ अब तक 2 ओवर्स बाकी हैं पावर प्ले के Well, Hassan, being a cricket expert, it's kind of a different question, but I would ask you a question about the bowling. You're a batter yourself, but I'll ask you a question about the bowling. What can a bowler do when this kind of onslaught is going on? How can you stop the onslaught? कॉलेज एंड से आएंगे बॉलर्स पहली बॉल करने अच्छा बॉल किया एक रन लिया सिंगल हासिल किया दोनों बैटर्स ने स्टिल वेट फॉर द लूज बॉल मगर अच्छा बॉल को रिस्पेक्ट देते हुए 1 रन हासिल किया इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द बॉलर चेंज ऑफ पेस वेरिएशन काइंड ऑफ दिस पिच इज हियर you not every ball try to bowl every ball fast that's why that's the reason
they're given to too much runs for last over, previous over, white ball and boundaries. So if you learn, that is the thing about that these kind of conditions, change of pace, variation, off cutter, lag cutter, very important for the bowler. Yeah, and there is a saying as well in cricket, the quicker it comes, quicker it goes off the bat. So quicker you bowl, quicker you can travel, unless you are accurate with your lines and lengths. So you have to keep lineup control with the variations, with the change of pace, maybe try a slow ball bouncer, maybe try a faster one in between, and then hit the good lines and good lengths and try to, cramp the batter for the space. Because when you provide the batter with the width, and he can open his shoulders and he can throw his bat at the ball and he can get underneath the ball, you provide him with the off volleys at some point in time, you're going to go the journey more often than not. Yeah, that is an example for Umar Gul. That's why impact in line, you reverse bowl, where you bowling from, length. That is the main important for the key factor for the bowlers. Like Rana Navidul Hasan, back of the hand, slow one ball. So these kind of format, T20, you change your action or throw arm balls. एक और सिंगल लिया स्क्वायर लेग पे बैटर्स ने, दोनों बैट्समैन बड़े कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं. जहां पर उनको बॉल मिल रही है वहां पर वो शॉट खेलते हैं और जहां पर अच्छा बॉल होता है उसको सिंगल करके स्ट्राइक रोटेट करते हैं. बड़ी अच्छी बैटिंग दोनों बैट्समैन के दरमियान. So this time it's Ali Coker who's operating from the college end into the fifth over. Wrapped on the pads, big appeal, but umpire Shaukat has no interest in that appeal. Maybe he thinks it was going down the leg side, and I think he was right too. लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से फ्लिक करना चाह रहे थे उसको और लेग बाय थोड़ा सा लो रहा है ये बॉल. डीप स्क्वायर लेग जो है वो बाउंड्री से बाहर है और शॉर्ट फाइन लेग. Nicely bowled and well played, pushed down to backward of point and taken a single, a quick single. Running in between the wickets has been good so far for Lahore Lions. That is a very intelligent batting. Falak, these kind of players play very good. Wait for the loose ball, respect given to the bowler. यही वो टारगेट है, यही बैटर्स का कि मुहतात तरीके से खेलें आप जब आप सेट हो चुके हैं क्रीज पे. अच्छा पंच किया, बैकफुट एक्स्ट्रा कवर पे कोई रन हासिल नहीं किया, अच्छी लाइन पे बॉलिंग की है, तो टाइम करना चाह रहे थे मगर कोई रन हासिल नहीं किया, डॉट बॉल हुई है. Yeah, he wanted a single on that occasion, but his partner was not interested. And rightly so, because it could have been curtains for them had they decided for that single. So far, it's been very good approach. Look at that, trying to force the issue. It was too close to cut. There was no width on offer. It was on the fifth stump channel. Good delivery to end the over. Over bowled, 5 done. It's 67 with all loss of wicket. One more to go for from the power play.
This time it's Daniel who's the bowler, who's been introduced into the attack from the pavilion end. He's hit that hard and hit that long, all the way for the maximum. That keeps Sarva Bhatti going up, up, up and over. अच्छा शॉट खेला ये बैटर्स ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शॉट खेला सर्कल का भरपूर फायदा उठा रहे दोनों बैट्समैन लाहौर को मुश्किलात हो रही हैं अब तक एक्स्ट्रा रन्स मिस फील्ड नजर आ रही है Nicely played in the air and all the way. It's cleared everything. This time it was square leg. Change of directions, but the same result for the batter. A very good toss to win for ATTA County. Islamabad Tigers. Softly played. Only single is available. And they're happy with that single. Daniel, the bowler from Lahore Lions, has been kept under huge pressure in this over. 2 maximums. Shorter one this time and played in the gap. The ball is running towards the boundary. The fielder is after it. And he manages to stop it just inside the boundary. But before he throws it back, I think the batters have crossed. For 4, they run 4. Doesn't matter, you hit the boundary or not, you can run 4. If you are provided with this kind of fielding, with this kind of sloppy work in the field. End of the power play, 6 done. '87 without loss of wicket. ओवर में 86 रन स्टिल दोनों बैट्समैन खेलते हुए अत्ता के एकेडमी एक बहुत बड़ा नाम ग्रास रूट लेवल पे पाकिस्तानी क्रिकेट में जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं दोनों बैट्समैन ने कमाल के शॉट खेले ग्राउंड के चारों तरफ लाहौर के बॉलर्स तो मगर दोनों बैट्समैन बता तरीके से 86 रन हो चुके हैं अत्ता के 87 runs, 6 overs. और प्ले मुकम्मल हो गया. Now the field restrictions are removed and Ali Coker will continue from the college end. Flicked away! What a pickup shot that is! Amazing! Simply amazing! Nowadays, these kind of strokes we see more often from the players. Reminds me of Mohammad Rizwan. He used to play this stroke quite efficiently. Outside the off stump, went for that big cut. Gets beaten altogether. It was a good reply from Ali Coker after being flicked for a maximum with the start of this over.
been kind of raining boundaries in this 7 overs show so far. 7th over is in progress. And the score is in excess of 70, which is just amazing. दोनों बैट्समैन बड़ा अच्छा खेल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि रन्स बनाएं. Still respected there. डीप स्क्वायर लेग पे सिंगल हासिल किया, पहले रन तेजी से लिया, बॉलिंग एंड पे थ्रो की और स्ट्राइक एंड पे मना किया कि सिंगल ही लेना है. अकेडमी के बैटर्स बड़े एतमाद से खेल रहे हैं दोनों बैट्समैन. अब तक क्रीज में मौजूद एक लंबा टारगेट दे सकते हैं लाहौर को, क्योंकि कोई विकेट अब तक गिरी नहीं है तक अकेडमी की. Usama is batting on 70. He's shown a class, shown a promise so far. He looks very elegant, Hassan, when he tries to flick the ball through the onside. Times the ball exquisitely well. जी फलक, यही वो टैलेंट है पाकिस्तान का और यही वो टैलेंट ढूंढ रहे हैं मैक क्रिकेट लीग में, मेजर क्रिकेट लीग में. बैटर्स ने लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, 1 रन हासिल किया. ह्यूज कॉन्सर्ट between Major Cricket League in Pakistan here. अच्छी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए कि वो यहाँ पर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें, अच्छी परफॉर्मेंस दें. Yeah, at the same time, 7th over comes to a conclusion and it's 96 without loss of wicket. 10 लड़के पार्टिसिपेट करेंगे, टॉप परफॉर्मर्स जो कि स्पॉन्सरशिप हासिल करेंगे कनाडा, कैरिबियन लीग, यूएसए, अमेरिका में. देखना यह है कि यहाँ टूर्नामेंट में आज दूसरा मैच मेजर क्रिकेट लीग का हाफिजाबाद में लाइव मैक टीवी पे देखा जा रहा है और दिखाया जा रहा है दुनिया के सारे ममालिक में. A good delivery to start for Daniel. Not only that, Hassan, it's been a very good initiative for the local players too. You can see a city like Hafizabad has been provided with such an amazing environment. It's a very good effort by MAQ TV and company, and that is a beautiful take. Well done, Daniel, off his own bowling, jumping in the air and plucking it out of the air. बैक ड्राइव पे बड़ा अच्छा कैच दिया और लाहौर के कैप्टन काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि बड़ी देर बाद ब्रेक थ्रू मिला है. 7 ओवर हो चुके थे अब तक, 8वें ओवर्स में ये ब्रेक थ्रू मिला. बड़ी अच्छी पार्टनरशिप दोनों बैट्समैन के दरमियान. यहां पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेवल लाहौर का नजर आया. बहुत बैक ड्राइव पे अमूमन कैच ड्रॉप होता है, मगर बड़ा अच्छा कैच हवा में उड़ते हुए कैच पकड़ा बॉलर्स ने. So Usama is the man to depart at the score of 70, and it needed something spectacular to get rid of this partnership, to break this partnership, I would say. After scoring a quick fire 70 runs, he is now back in the hut, and they will be quite happy to see the back of him, the boys of Lahore. Well played. जिस तरह से 70 रन की इनिंग्स खेली, अगर ये और मजीद 30 पे खड़े होते तो 100 रन कर सकते थे. इससे पहले मिड सेंचुरी मुकम्मल की लाहौर के अंदर के ओपनिंग बैट्समैन ताहिर बेग ने दूसरी 50 इस टूर्नामेंट की और दूसरा मैच बड़ी अच्छी इनिंग खेली. सुलेमान ने भी 50 की, थर्ड 50 इस टूर्नामेंट की. ताहिर बेग के साथ कराची शाह की तरफ से दोनों बैट्समैन के दरमियान बड़ी अच्छी पार्टनरशिप रही और ये सेकंड पार्टनरशिप भी नजर आई हमें यार ओपनिंग बैट्समैन अता अकेडमी की तरफ से. Nicely bowled, pushing it through, and that one kept a little low too. We can
expect that because Daniel is not a tall fellow. अच्छा बॉल किया था, लेफ्ट हैंड बैट्समैन ने फेस किया आउटसाइड ऑफ स्टंप। एक और स्ट्रेट बॉल, तेज बॉलिंग कर रहे हैं, कोई रूम नहीं दे रहे बैट्समैन को और कोशिश करेंगे डॉट बॉल खिलाएं। बैट्समैन प्रेशर में आते हुए 2 बॉलें डॉट बॉल खेली हैं। अगेन तीसरा बॉल थोड़ा सा लो रहा है, लॉन्ग ऑन की तरफ सिंगल जाना चाहते थे मगर कोई रन हासिल नहीं किया। Well, I was asking a question to Hassan Raza, my fellow commentator, about how to stop the onslaught, but the answer has been given by the bowler Daniel. और सिंगल लॉन्ग ऑन की तरफ तो इससे पहले मुकम्मल किया। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं बॉलर्स। A successful over comes to an end from Daniel. Well bowled. 8 done. It's 97 for 1. अच्छा कॉम्बिनेशन देखने में आया दोनों बैट्समैन के दरमियान, राइट एंड लेफ्ट हैंड, जो कि बॉलर्स की लाइन को बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कॉलेज एंड से बॉलर लाहौर के बॉलिंग करेंगे, अपने ओवर का पहला बॉल करने आए। Outside edge, that one went quickly across to the boundary, but there was a fielder at third man boundary who stops the ball, and a run is being taken. And now Ali Coker is the bowler. He's into his third over. Looks as if that the captain wants him to bowl through. I wonder who is going to be his bowlers to bowl in the death overs, because he's been their main bowler so far. जी अच्छा बॉल कर रहे हैं और बारी किनारा लेते हुए थर्ड में लगी बॉल सिंगल लिया। दूसरी बॉल करने आए, थोड़ा सा रिवर्स नजर आया, रन आउट हो सकता है, डायरेक्ट स्टंप पे थ्रो करेंगे अगर, और मगर बॉल उनके हाथ में नहीं प्रॉपर और थ्रो की स्टंप्स पे नहीं लगी, मगर डेंजरस जोन में पहुंच चुके थे अपना। Just got a little too excited, in my opinion. I think he had ample time to take his time and had a clear sighter of the stumps and then throw it, hit the bullseye, but the ball just stuck. Actually, from the releasing point, it stuck in those grassy areas, I would say, where we can see the the dense patches of the grass. अच्छा बॉल, बॉलर बैक ड्राइव पे खेले, इसको लॉन्ग ऑन की तरफ खेले जाते थे मगर स्टंप से ये बॉल था, कोई रन हासिल नहीं किया। लाहौर की फील्डिंग साइड प्रेशर डालते हुए इस्लामाबाद टाइगर्स की टीम को, इस्लामाबाद टाइगर्स की तरफ से अब तक 1 विकेट गिर चुकी है। शॉट एक्स्ट्रा कवर पे खेला, मिस फील्ड हुई, पहला रन 23 से लेंगे, यकीनन दूसरे रन के लिए वापस मुड़े और 2 रन हासिल किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैन के दरमियान, 2 रन हासिल किए। मिस फील्ड का भरपूर फायदा होगा तो एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद थे लाहौर के कैप्टन, जिनसे मिस फील्ड हुई, 2 रन हासिल किए और प्रेशर डालते हुए लाहौर के बॉलर्स और फील्डर्स पे। Yeah, 100 comes up with that couple. 101 for 1. 9th over is in progress. It's been very good show with the bat by Islamabad Tigers so far. Tried to pull that, couldn't get the connection. Maybe the ball was a little quick on him, got big on him, and he scampers through for a leg bye. ऑफ कोर्स लेग बाय का रन हासिल किया, उसको पुल करना चाहते डीप मिड की तरफ मगर मिस हिट हुई और चेंज ऑफ पेस नजर आया थोड़ा सा इस बॉल पे। फील्डिंग में मुश्किलात का सामना लाहौर को लेफ्ट एंड राइट हैंड बैट्समैन खेल रहे हैं। बैक टू पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन फील्डर्स मौजूद।
Yeah, there you see, working on the onside and getting the ball in the gap. The fielder fails to stop the ball and it runs across to the boundary. Another boundary by the right-hander this time. It's been a very good finish to the over from the batting side, and it's 106 for 1 after 9. Changing the bowling now. Daniel has been taken out of the attack, and it's been Faisal who's been given the responsibility to bowl the 10th over. Who starts off with a half volley outside the off stump, which has been slashed away down towards backward of point. Only 1 run is added to the total. Left and right hand combination, as you were mentioning, Hassan Raza, is always a teaser for the bowling side. जी हाँ, मुश्किल हो जाता है और फील्डिंग साइड करना बड़ा मुश्किल होता है, जिस तरह से लाहौर के कैप्टन कर रहे हैं, अब तक ब्रेक थ्रू हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा बॉल थोड़ा सा लो रही है, इसको डिफेंस किया, डीप मिड की तरफ कर रहे थे मगर इसको पुश कर रहे थे सिंगल लेने के लिए, मगर टॉप बॉल खेला है, स्टंप टू स्टंप बॉल करते हुए राइट आर्म ऑफ स्पिन ओवर द विकेट पवेलियन की तरफ से. That was a quicker delivery and well played. Can't pierce the field, but will take a run, get to the other end. And now I would love to bowl to the left-hander. Right arm off spinner always enjoys bowling against the left-handers. There's a great example of the great Saklan Mushtaq. He was very successful against the left-handers. Mataya Muralitran, and we see Muhammad Hafizabad was very successful against the left-handers too. Shorter one this time, quicker one, beats everyone, and in fact into the boundary as well. This is a poor stuff. Again extra runs बने और थोड़ा सा लो बाउंस रहा ये बॉल का ऑफसाइड ऑफ स्टंप. 5 रन बने वाइड के भी और 4 रन्स. Second time we have seen 5 wides coming to the total, added to the total, merely because of the indisciplined bowling. This time tried to stop the ball of his own bowling, did the bowler, but can't do that, and a run is being added to the total in the process. So it's been a very good start, I would say, for the batting side. It's been a good toss to win. Of course, good toss to win. Islamabad Tigers given to full strength with the Lahore bowlers. एक और शॉर्ट बॉल, 4 रन हासिल किए मिड फील्डर राइट फील्डर से शॉर्ट फाइन लेग पे 4 रन. खूबसूरत इशारा अंपायर का. Now, was there a lapse in concentration, or maybe that one slipped out of his hands, because that was an ordinary delivery? It was a long hop, asking for punishment down the leg side, and the batter made the most of it. एक और हाई स्कोरिंग मैचेस नजर आ रहा है यहाँ पर बैटिंग साइड की तरफ से कि अच्छा टारगेट दे सकते हैं लाहौर को, जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं. शॉर्ट बॉल स्पिन होके स्टंप्स में आया, आउटसाइड ऑफ स्टंप पे थोड़ा लो भी रहा, डॉट बॉल की कोई हासिल नहीं किया. So halfway through the first innings, 10 overs bowled, it's 118 for 1. Islamabad Tigers.
10 overs been bowled. It's 118 for 1 after winning the toss. It's been a very good display of batting so far by Islamabad Tigers. And now in the com box, I've been joined by Naseem Rajput. Welcome, Naseem. Thank you, Falak. Excellent batting by attacking Islamabad Tigers openers. This time trying to hit to the onside and misfield, and that's caused 4 runs for attacking Islamabad Tigers. Very sloppy work in the field so far that we have observed. Another misfield that was a sloppy stuff allows the ball to go through for another boundary. But the batters will take it. इस बार कवर की जानिब खेला, 1 रन हासिल किया. अच्छी बैटिंग अगर फलक हमने देखी है अटैकिंग इस्लामाबाद टाइगर्स के बैट्समैनों की जानिब से, और स्पेशली उनके दोनों ओपनर्स जिस तरह की बैटिंग करके गए. उसामा ने तो आज शानदार बैटिंग की, 70 रन स्कोर किए, लेकिन जो ओपनिंग स्टैंड था 97 रन का, आई थिंक वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसकी वजह से बड़ा स्कोर करना चाहिए यहाँ. Yeah, predominantly, if your start is good in the games, you are going to, have the upper hand over the opposition. And this is what we have seen so far. And earlier in the first match too, if you can see, Baig from... in the first innings, Baig played brilliantly, scored a 50, and he was equally well supported by Waqas, his partner. Talking about the first match, they were representing Karachi Sharks. It was a good delivery, and there is an appeal, and the batsman is walking. I think he's nicked it. Or has he? और यहाँ पर अंपायर ने चूंकि आउट नहीं दिया था तो बैट्समैन चले गए थे. उस वक्त लाहौर लॉयंस के फील्डर्स और बॉलर्स ने अंपायर से ये कहा कि ये आउट है और बैट्समैन जा चुके हैं, तो फिर अंपायर ने आउट दिया. कभी कभी ऐसा होता है. यहाँ पे क्राउड बहुत मौजूद है, खासकर बच्चे. ये एक बहुत ही अच्छा पूरा एक जिम्नेजियम है यहाँ, और इस वक्त आप जिस जगह देखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं बच्चे अपना पसंदीदा स्पोर्ट्स खेलते हुए दिखाई देंगे. और यहाँ हाफिजाबाद में भी हम देखें तो क्रिकेट का लगाव जिस तरह पूरे मुल्क में दिखाई देता है, यहाँ ज्यादा दिखाई दे रहा है. Yeah, you're right. People do love cricket here, and we have seen throughout the day a lot of crowd has built up. The people have come in numbers, which is a good sign for these players because it plays a sporting role. The spectators are, I would say, the backbone of the sports, and they play a huge role. बिल्कुल, बहुत ही बड़ा रोल है. आपने सही कहा यहाँ, क्योंकि इनकी वजह से रौनक है. ये जो हम साउंड सुन रहे हैं चारों तरफ से, वो जो सेलिब्रेट कर रहे हैं प्लेयर्स को, ये बहुत प्लेयर्स की अपनी मोटिवेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और जो हमारे आने वाला वक्त है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट दिखाई देता है. फलक अच्छे बच्चे पॉजिटिव जानिब जाएं, स्पोर्ट्स की जानिब जाएं. इस तरह के इवेंट जो यहाँ हो रहा है, MCL मेजर क्रिकेट लीग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और इनके जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, स्पेशली मोहम्मद अफजाल कुरैशी, मैक कुरैशी, और वैसे भी अमेरिका में बहुत काम कर रहे हैं. पाकिस्तानी क्रिकेटर्स काफ़ी सारे वहाँ से जाके खेल चुके हैं. उनमें आतिफ मकबूल भी वहाँ जाके खेल चुके हैं. हसन रजा खुद जो हमारे डायरेक्टर हैं वो भी वहाँ जाके क्रिकेट खेल चुके हैं. तो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को फ़रोग़ दिया, अपने क्रिकेटर्स को सपोर्ट किया. अगर वो वहाँ पे सेटल हैं तो फिर हमारे क्रिकेटर्स को भी उसकी सपोर्ट मिली, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है. Outside edge this time, and the best place to hit a ball for a boundary, I would say. You can't have a feel for that unless you have a slip, but they cannot afford to have a slip at this stage, at this point in time. It was a lucky boundary, I would say. Fortuitous, but the batter will take it. कभी कभी तमाम चीज़ें हक में नहीं जा रही होती हैं फलक, और ऐसे ही हुआ जब रन स्कोर हो रहे होते हैं तो फिर रन्स को रोकना बहुत मुश्किल होता है, और उसमें इस तरह के शॉट्स भी लगते हैं. लेकिन क्रेडिट जाएगा यहाँ पे अटैकिंग इस्लामाबाद टाइगर्स के बैट्समैनों को, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की. और सबसे अच्छी चीज़ ये कि
यहाँ क्यूरेटर को और स्पेशली ग्राउंड स्टाफ को बहुत दाद देना पड़ेगी। राना मुबशिर की सरबराही में जिस तरीके से यहाँ काम हुआ, हसन रजा खुद लीड कर रहे थे, फिर पूरी मैनेजमेंट यहाँ मौजूद थी। बहुत ही क्यूरेटर को यहाँ रोल देना पड़ेगा। और जिस तरह की पिच है, पहला मैच भी हाई स्कोरिंग हुआ, इवन बाउंस पे गेंद आती हुई दिखाई दी, तो इससे अच्छा पिच हो नहीं सकता। तो यहाँ बैट्समैनों को बहुत ही मौका है और इस तरह की पिच होनी चाहिए T20 क्रिकेट में, T10 क्रिकेट में, जितने भी शॉर्टर फॉर्मेट है। Yeah, it's a teamwork and all the ground staff and everybody is getting the right credit from Naseem. Full toss this time, can't pierce the offside field. There was a chance at the striker's end. Good throw, but the batter was quick enough to make his ground. So something happening. They're trying to force the issue now because, in my opinion, they have nothing to lose. Plenty of wickets in hands and you can afford to play these strokes. What do you make of it, Naseem? मैं सबसे पहले तो अंपायर सरवर भट्टी का इशारा देखा। जिस तरह का शॉट था, इशारा ऐसा ही होना चाहिए जो उन्होंने बैकफुट पे जाके ऑन साइड पे हिट किया है, फ्लैट 6। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ दिखाई दिया। अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो पहला दिन बहुत ही अच्छा रहा यहाँ, और इस बार एक और शानदार कनेक्शन, सेम रिजल्ट, 6 रन। If you keep bowling him there, he will keep hitting you all day and all night. Shorter one asking for punishment and slapped away over mid-wicket. Now the bowler is absolutely on the back foot. He's bowling too short for my liking. Needs to change his length more than the line. And a little bit of conference meeting is also going on between Lahore Lions. बिल्कुल बहुत ही मुश्किलात बढ़ती जा रही है क्योंकि रन्स बहुत ज्यादा स्कोर हो रहे। उमैर बाजवा ने बैक टू बैक सिक्सेस लगा के और उनकी मुश्किलात बढ़ाई है। नहीं, रन्स रोकना होंगे यहाँ फलक, वरना बहुत ज्यादा रन्स हो गए तो फिर इस बार फुल टॉस गेंद थी, ऑफ साइड की जानिब थी। खेल के 1 रन हासिल किया और ओवर थ्रो का रन्स भी मिल सकता है, लेकिन वहां बैट्समैन तैयार नहीं थे जो अब स्ट्राइक एंड पर होंगे। Yeah, the bad bounce there. It wasn't a good throw in my opinion because he got a little too excited, Daniel, the fielder, in throwing that ball and conceded an extra run. Now the left-hander is going to be on strike. Actually, they're enjoying their combination, both of these batters, left-hand, right-hand combination. It's helping their cause because they've kept the fielders on their toes throughout the course of this partnership so far. This time trying to play with the laborious approach, I would say, and gets beaten altogether. फलक, जिनकी ये टीम है, अताउर रहमान, हसन अली जैसा स्टार क्रिकेटर्स उन्होंने प्रोड्यूस किया, उस एकेडमी ने प्रोड्यूस किया, तो ज़ाहिर है फिर जो उन्होंने कॉम्बिनेशन खिलाया, उनका अपना एक्सपीरियंस है। और हम ये टैलेंट हंट प्रोग्राम कर रहे हैं, एक प्रॉपर टैलेंट हंट प्रोग्राम, तो एक ऐसा टैलेंट प्रोड्यूस किया है अताउर रहमान ने कि चैंपियंस ट्रॉफी की फतह और कई सारी बड़ी फतवात में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा हसन अली का। और उनके बड़े भाई जिन्होंने उन्हें ट्रेन किया, तैयार किया, वो लीड कर रहे हैं यहाँ पे अता टाइगर्स इस्लामाबाद, अता किंग इस्लामाबाद टाइगर्स को। तो एक एक्सपीरियंस नजर आया है यहाँ पर, और अब तक जिस तरीके का स्कोर हम देख रहे हैं बोर्ड पर, मजीद दिखाई देगा क्योंकि अब तक विकेटें नहीं गिरी हैं। Yeah, of course, you're right. Naseem, 200 is definitely on the cards. 141 after 12 overs. They've got plenty of wickets in hands, 8 of them. Nicely bowled, good start to the over. But they don't miss these singles. This has been a plus point in this partnership so far. Along with the boundaries, they've run well between the wickets, both of these. बिल्कुल,
इस वक्त थोड़ा सा फंबल हुआ था फील्डर से, अच्छे एफर्ट थे उनके, कुछ अनइवन बाउंस की वजह से वो बॉल को पिक नहीं कर सके। तो एफर्ट अब तक लाहौर लायंस की जानिब से जारी है और ये जारी रहने चाहिए। मुकाबला कभी भी ख़त्म नहीं होता। हमने देखा हैदराबाद ने शानदार फाइट बैक की, एक बड़े टारगेट के होते हुए हैदराबाद जैगुआर्स ने जिस तरीके की फाइट बैक की वो बहुत ही शानदार था। कराची किंग्स का कराची का बड़ा एक्सपीरियंस था, कराची शार्क्स का, और उनके कैप्टन ने बहुत अच्छे अंदाज से टीम के कमबैक में रोल प्ले किया, आतिफ मकबूल ने। Actually, it's not winning or losing, it's about the way you play. So you're right, Naseem, they've shown promise. The young side, they were predominantly the youngsters in Hyderabad Jaguars, and against the experienced side like Karachi Sharks, they've put up a very good fight, very good show. So taking over from that experience, you're right. Qalandars should not lose hope, but this is not going to help their cause because the left-hander has sent this ball all the way down to mid-wicket for another maximum. शानदार हिट, बहुत ही जबरदस्त हिट लगाई है यहाँ आप मिड विकेट की जानिब, और इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं बैट्समैन, और जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी चाहिए उसी स्ट्राइक रेट को मेंटेन किया हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल है कि तकरीबन 220 रन इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह की विकेटें उनकी बाकी है। सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं, बॉल मिलता है तो दोनों बैट्समैन हिट लगाते हैं। He's knocked him over. What a delivery! Success in the end for Hasnan. He takes his revenge and has the last laugh. Left-hander goes back in the hut. बिल्कुल, थोड़ा सा आगे पड़ी हुई गेंद थी और उसे ऑन साइड की जानिब खेलने चले गए थे। बहुत अच्छी जगह पे गेंद को बॉलर ने पिच किया था, इस तरह ये दूसरा नुकसान उठाना पड़ा। हिट लगाते हैं। विकेट्स की जरूरत है कहीं ना कहीं। अब लाहौर लायंस को प्रेशर डेवलप करना होगा क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड पर खासे रन्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे फलक, जिस तरीके से आज हैदराबाद जैगुआर्स ने कम बैक किया, वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 190 रन्स जब टारगेट देखा था तो बहुत ही बड़ा टारगेट लग रहा था, लेकिन वो खासे करीब गए, सिर्फ 14 रन से मैच आ रहे। आज भी जिस तरीके की बैटिंग हम देख रहे हैं, क्यूरेटर्स को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाएगा। इसी तरीके की पिच तैयार होनी चाहिए। मैं बहुत सारे लोग यहाँ पर जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है वो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इतना हाई स्कोरिंग मैच ना हो, लेकिन क्योंकि कल बारिश हुई थी, 2 दिन बारिश हुई थी, खासा डिफ़िकल्ट होता है पिच को तैयार करना। लेकिन हैट्स ऑफ टू ग्राउंड स्टाफ एंड द मैनेजमेंट, बहुत अच्छा काम किया। Yes, right. They deserve all the credit what they are getting from Naseem, the ground staff. Because I would say that it's been raining throughout the course of the day yesterday, and after that rain and today too, we have seen that it was partly cloudy, and there was some sort of clouds building up in the sky. And in these conditions, to prepare these kind of tracks, which are so much result oriented, in my opinion, in terms of the batting, it is a phenomenal achievement. Anyways, it's end of the over. It's 149 for 2. तेरह ओवर्स में 149 रन खासे रन है। बैट्समैनों को बहुत क्रेडिट जाएगा, और जैसे उसामा की हमने बात की 70 रन स्कोर किए। वहीं दिनेश कुमार को मैंने देखा आज हैदराबाद जैगुआर्स के, मैं देखना चाहूंगा उनको, और भी बड़ी अच्छे फ्लो के साथ बैटिंग कर रहे थे।
ऑफिसम से खासी बाहर गेंद, वाइट बॉल का सिग्नल अंपायर की जानिब से। You're talking about Dinesh. Dinesh actually is a familiar name in cricket. Dinesh Kanaria from Pakistan used to play in the test matches. Dinesh Ramdin from West Indies. Dinesh Chandimal from Sri Lanka. Dinesh Karthik. Dinesh Mungia from India. So it's a familiar name in cricket, isn't it? वेरी गुड बॉलिंग। दानिश कनेरिया का नाम भी दिनेश कनेरिया ही है। पाकिस्तान के भी हमारे जो उनका असल नाम है वो दिनेश कनेरिया ही है। Short and wide, and will be called wide in a typical server butty fashion. Now after those couple of wides, change of angle for Faisal Bhatti, the bowler. And it has brought about the maximum all along on. The change of angle doesn't work. It goes further in the favor of the batting side. बिल्कुल शानदार हिट यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं इस वक्त अता किंग इस्लामाबाद टाइगर्स के बैट्समैन, और ये भी बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था। बैकफुट पे जाके बहुत अच्छे अंदाज से पंच किया और लॉन्ग ऑन की जानिब 6 रन हासिल किए। कॉन्फिडेंट बैटिंग। Actually, it's not an easy shot to play. It reminds me of a great hit from the West Indian big hitter Chris Gale against Harbhajan Singh, 112 meters 6 off the back foot over long on. So you need immense power to, get the ball that long for 100 of meters. It's amazing, simply amazing. Nicely bowled this time, gets beaten, dot ball. बिल्कुल बहुत ही अच्छी हिट लगाई थी यहाँ, लेकिन अच्छा कमबैक यहाँ बॉलर की जानिब से। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, एक बड़ी क्लोज अपील थी लेकिन अंपायर को मुतासिर ना कर सकी। चौदह ओवर 158 रन और 2 आउट आफ्टर 14 ओवर 158 फॉर 2। इस वक्त बैटिंग बड़ी डोमिनेट करती हुई दिखाई दी। सिर्फ इस वक्त नहीं बल्कि आज सारा दिन हमने देखा ताहिर बेग लाहौर कलंदर्स के स्टार ने आज यहाँ शायकीन क्रिकेट को बहुत महसूस किया। सुलेमान ने जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की। उसामा ने आज बर्क रफ्तार इनिंग खेली और खासकर उनके दोनों ओपनर्स को क्रेडिट जाएगा। 8 ओवर में 97 रन के स्टैंड ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था अता किंग इस्लामाबाद टाइगर्स को, जिसके बाद अब तक रन बन रहे। इस बार अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लाइन पर गेंद थी, रिस्पेक्ट दी बैट्समैन ने, 1 रन जरूर हासिल किया। Actually, it's a very good combination of the openers, what we have observed so far in these couple of matches. One batter is trying to be the aggressor and the other is trying to make sure that one end is safe. अच्छी फील्डिंग यहाँ पर और बहुत सेंसिबल अप्रोच थी कि थ्रो नहीं किया, क्योंकि बैकअप पे फील्डर मौजूद नहीं थे तो रन बन सकता था। ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है गेम में। अच्छी अप्रोच के साथ और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है। Now you're right, Naseem. You always need a positive approach towards the game to become successful.
I always say that you win some, you lose some, but it's the way you play. It's all about your approach towards the game. इन दोनों बैट्समैनों को बिल्कुल अब खुल के हिटिंग करनी चाहिए. विकेट्स मौजूद है और बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं. मैक्सिमम जितने रन बन सकते हैं बनने चाहिए. Now, try the ramp and it clears the fine leg fielder into the boundary for 4. So a little bit of a risk involved in that stroke, but why not? You can afford to take those risks when you are in such a beautiful position. You have 8 wickets in hand and it's a commanding position in my opinion. Beautifully played this time. Down towards the boundary and a single is added to the total. Hasnan is the bowler. End of the 15th, it's 165 for 2, 5 to play. Nicely bowled by Umair Bajwa. Rana Kashi, the left-hander, is on strike. इस बार बहुत ही अच्छा स्ट्रोक और उतना ही शानदार कैच. ये तीसरा नुकसान उठाना पड़ा. राना काशिफ आउट हुए यहां. फैसल भट्टी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कामयाबी दिलाई है यहां. पहले एक डॉट बॉल किया और उसके बाद फील्डर को भी बहुत क्रेडिट जाएगा जो शानदार कैच लिया. Now something very rare that we have seen in this innings so far, a spectacular fielding. Hussain Virak is going to be the new batter, coming at number 5. और इस बार फुल टॉस गेंद मिस कर गए. आउट होने का खतरा और इस तरह ये एक और विकेट हासिल हुई. लेकिन ये खासी लकी विकेट थी क्योंकि बहुत अच्छी लेंथ पर फुल टॉस मिल गई थी यहां बैट्समैन को, लेकिन एज लगा और यूं चौथा नुकसान हुआ. Well, everything was going against their favor, so they need a little bit of luck too. It was a lucky wicket, but now they've taken 2 quick wickets,
So maybe there is something to get back in this match for the bowling side, for the Lahore boys. It was a top edge and Hussain has just come and gone. Can't trouble the scorer. And the breaking news is that Hafizabad, the bowler, is going to be on a hat-trick. अता किंग इस्लामाबाद टाइगर्स के कैप्टन अताउर रहमान बैटिंग के लिए आए और उनके सामने हैट्रिक बचाने का चैलेंज भी होगा. काशिफ भट्टी ऑन हैट्रिक. पहले ही दिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें इस लीग में हमने देखी. खासे स्कोर हमने देखे यहाँ पर. मेजर क्रिकेट लीग जबरदस्त किस्म का आगाज. It's going to be in the captain ATTA, the new batter. इस बार हिट लगाने गए थे हैट्रिक बॉल पर. ये है अताउर रहमान जिन्होंने हसन अली को प्रिपेयर किया, बनाया. बहुत बड़ा रोल रहा उनका. और बहुत सारे क्रिकेटर्स इनकी एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं. खुद भी क्रिकेट अब तक खेल रहे हैं तो फिटनेस का ख्याल रखते हैं. इट्स अ टैलेंट हंट प्रोग्राम और ये टैलेंट प्रोड्यूस कर चुके हैं. तो ऐसे लोग होने चाहिए लीग में. There was a little bit of pause before this ball because there was a strong breeze blowing across the field and it was even hard for the bails to get stick on the stumps. The umpires are trying their level hard to get those bails stuck in the stumps. इस बार बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ कट करने में कामयाब. बहुत ही शानदार स्ट्रोक कैप्टन अताउर रहमान की जानिब से. बैक फुट पे गए और यहाँ कट करके 4 रन हासिल किए. Yeah, the captain announcing his entry with the boundary. Beautifully played cut shot to end the over. 16 done, it's 171 for 4. So with the start of the 16th over, back-to-back wickets, I was wondering if there was a mini collapse just with the start of the last power play. It's not an official power play, but I call it a power play because the batters try to maximize these last 5 overs. That's why I call it as a power play. So in the last 5 overs with the start of the 16th over, I wonder if that was a mini collapse or that was a little bit of door opening up for the boys of Lahore to get into this match. But ATTA and company have some other ideas. Let's see what happens. थोड़ा क्लाउडी वेदर है. एकदम से क्लाउड आ गए. देखते हैं कि अब वो इनिंग को कहां लेके जाते हैं. जो आखिरी 5 ओवर्स हैं वो बहुत ही क्रूशल होंगे इस मैच में क्योंकि ऑलरेडी अता किंग इस्लामाबाद टाइगर्स डोमिनेट कर रहे हैं. और जो स्ट्रोक खेला उनके कैप्टन ने वो जेन्युइन क्रिकेटिंग शॉट. Nicely fielded off his own bowling. Hasnan is the bowler continuing from the college end. Now out of nowhere, a strong breeze has started to flow across the field. Oh, he was trying too many different things in that strike. In the end, fails to get the connection. A dot ball nevertheless.
इनोवेशन होनी चाहिए। हमारे क्रिकेटर्स हम सारी दुनिया में जो देख रहे हैं अब क्रिकेट खेली जा रही है उसमें इनोवेशन बैट्समैन मुख्तलिफ अंदाज से कर रहे हैं, वो 360 कहलाते हैं। तो ये चांसेस लेने चाहिए। इस वक्त सारी दुनिया इस जानिब जा रही है, हमें भी इस जानिब बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज से सोचना होगा। इस बार शानदार स्ट्रोक, गैप बनाने में कामयाब, वेरी वेल प्लेड, जबरदस्त बैटिंग यहाँ। Yeah, width was on offer and he's made the most of it. Brilliantly executed that cut shot towards the third man boundary for 4. Played it late and got the ball perfectly in the gap. Talking about the innovation, I think the innovation was started from Telekurtane Dilshan with the Dil scoop, and then it was taken over by the great A.B. de Villiers, who was known to be 360. What a talent he used to be. साइम अयूब भी कुछ इस तरह के टैलेंट पाकिस्तान को दिखाई दे रहे और अच्छे प्लेयर हैं। ये अच्छा हुआ कि अगर वो ओडीआई टीम में नहीं थे तो उन्हें जिम्बाब्वे भेज दिया गया। अब जो आपको टैलेंट नजर आए, टैलेंट हंट का मकसद क्या है कि अगर आपको कोई टैलेंट दिखाई दे तो आप उसको कैरी जरूर करें, और यहाँ से भी यही कोशिश हो रही है इस MCL मेजर क्रिकेट लीग से कि जो टैलेंट हो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होना चाहिए, कहीं ना कहीं जहां पर भी हो सकता है, ताकि टैलेंट जाया ना हो इस मुल्क का। यही कोशिश है यहाँ। Outside the off stump, in the air for a while, but good fielding, I would say, in the end. But they're going to waste that good effort with the bad toe. अपनी इतनी अच्छी कोशिश खुद जाया कर दी फील्डर ने। यहाँ पर थ्रो की जरूरत नहीं थी, फील्डर खासे पीछे थे, लेकिन बहुत अच्छे एफर्ट, जो उनकी फील्डिंग थी वो बहुत बेहतर थी। अच्छी लाइन पर हसनैन ने बॉलिंग की, यहां पर भी ज्यादा रूम नहीं दिया, एक ही रन हासिल हुआ। आफ्टर 17, 177 for 4, attacking Islamabad Tigers. वैसे फलक जिस रफ्तार से रन बन रहे थे, एक वक्त में 12-13 ओवर तक तो ये 12-13 की एवरेज से खेल रहे थे, थोड़ा सा कंट्रोल किया है यहाँ। Well, Naseem, it reminds me of the first innings of the first match. Similar situation was there in the first innings of the first match too. The openers got to a flyer, and then the spinners were introduced into the attack. In between, they put up some sort of breaks they put on, and just towards the end of the innings, the scoring rate was stopped to some extent. And similar kind of situation we are observing here in this match too. Sajawal is the bowler who's been introduced into the attack now. वेरी गुड स्ट्रोक, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद थे, एक रन हासिल किया यहाँ। अच्छी लाइन पर सजावल ने ये गेंद की थी। और एक अच्छा स्ट्रोक अताउर रहमान का, एक रन हासिल किया। एक रन से काम नहीं चलेगा। जिस तरह का प्लेटफॉर्म इस वक्त दस्तयाब है, और इस बात को समझते होंगे अताउर रहमान और उनके साथ बैट्समैन। Yeah, you're right, Naseem. Only 2 overs to go after this, and they've got half of the side in the bench. Oh, look at that! Oh, good fielding. और ये रन आउट हुए।
इस तरीके से वेरी गुड फील्डिंग बाय बॉलर ऑन हिज ऑन बॉलिंग. बहुत अच्छे एफर्ट यहाँ दिखाई दिए और ये सजावल ने एक कामयाबी दिलाई यहाँ. कॉटन बोल्ट भी ऐसा लगा था कि ये है, लेकिन लेग एम्पायर ने चूंकि डिसीजन दिया तो फलक इसका मकसद है कि रन आउट हुए यहाँ. लेकिन अच्छी बॉलिंग सजावल की. आज सजावल ने आने के बाद काफी अपनी इब्तिदाई गेंदें खासी बेहतर की हैं. Yeah, you're right, and the conditions are becoming helpful for the fast bowling too. Strong breeze is blowing across the field, the clouds are covering the sky, no sunshine whatsoever for the last 30 minutes or so. So the conditions have become favorable for the bowling, for the fast bowling in particular, and they're trying to make the most of it, the bowlers of Lahore Lions, which is a good sign for them. And Sajaval, who has been introduced into the attack in the later part of the innings, has produced some guns, and adding to the characteristics of his good bowling, I would say he's done a very good job with an excellent fielding, got a run out. Wajahat Ali is going to be the new batter at number 8. ऑन साइड की जानिब खेला. एक रन ही हासिल कर पाएंगे यहाँ वजाहत. अच्छा ओवर अब तक सजावल का, जहां एक सैड बैट्समैन को भी आउट किया रन आउट के जरिए. मोमेंटम कहीं ना कहीं लाहौर लायंस ने हासिल किया है इस इनिंग में. They've been able to stop the scoring somewhat, to stop the flow of the boundaries, which is a good sign for them. At one stage, nicely bowled, very good Yorker, but he has to run too far down on his follow through, and in the process a run has been added to the total. और बहुत अच्छी लाइन पर बॉल किया था सजावल ने. ये बहुत ज्यादा मौका नहीं दिया यहाँ अताउर रहमान को. यॉर्कर लेंथ टांगों में जब होती है तो फिर सबसे पहले तो आप अपने पैर बचा रहे होते हैं. And it was a swinging Yorker. Another one, another beautiful delivery, another swinging Yorker. Talking about swinging Yorkers, who better than the great Waka Yunus? बिल्कुल. वकार यूनुस legend after 182 for 5 attacking Islamabad Tigers. Looks as if Daniel, the left-arm orthodox, has been brought back into the attack. This time from the college end. सामने की जानिब चौधरी का शानदार स्ट्रोक. 4 रन हासिल किए. यहाँ बड़ी लेंथ मिल गई थी उनको आगे इस बार, जिसका भरपूर फायदा उठाया. और बार बार क्रेडिट देने को दिल चाहता है क्यूरेटर के लिए, ग्राउंड स्टाफ के लिए. हमारी टीम ने जो एफर्ट किए पिछले 2 दिन में, जो पिच तैयार हुई है, परफेक्ट फॉर बैटिंग. Daniel, who was very successful in his first spell, greeted with a beautiful straight drive over his head with the start of his second spell. In this second spell, he's going to only bowl 1 over. जबरदस्त हिट यहाँ पर. थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया और बहुत ही शानदार अंदाज से गेंद को सामने की जानिब बाउंड्री के बाहर पहुंचाया चौधरी ने. Well, Chaudhary seems to be love that area down the ground. He likes that area, the bowler back drive as they call it. He's hitting straight with some conviction. Now they're throwing the ball in the air, and once more they don't seem to be happy with the ball. Now he's rubbing it, the umpire shook it on the grass.
I wonder what is happening or what is de-shaping this cricket ball. Maybe it's been hit very hard down the ground and it hits those poles over there of the side screen, and there is a fence too. Maybe it gets stuck there. That's why it gets a little bit D-shaped. इस बार बोल्ड कर दिया दानियाल ने. बड़ी हिट लगाने गए थे चौधरी, लेकिन बॉल को प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर सके और एक इंपॉर्टेंट विकेट दानियाल ने दिलाई. छक्का खाने के बाद जबरदस्त कमबैक यंग बॉलर की जानिब से. लेकिन वजाहत अली बोल्ड हुए लेकिन अपना रोल प्ले करके गए. जो जिस तरह की बैटिंग दरकार थी वो हिट करते हुए आउट हुए, और इसी चीज की जरूरत है इस वक्त अटैकिंग इस्लामाबाद टाइगर्स को. उस्मान बैटिंग के लिए आए जो ज्वाइन करेंगे कप्तान अताउर रहमान को. Yeah, you can afford to go after the bowling at this point in time. No matter in the process you can lose your wicket, but that is acceptable. The situation is demanding kind of slogging. Attacking batting is needed because we are almost towards the end of this innings. Second last over is in progress. And Daniel is bowling brilliantly. After being hit for a 6 and a boundary, he has come back very well. This time pushed in the gap and 2 runs were available. Nicely played. फिर कम बैक यहाँ दानियाल का. उस्मान इस बार कनेक्ट नहीं कर सके गेंद को. Uh, 194 for 7 after 19 overs. अब आखिरी ओवर होगा यहाँ, और 200 रन जो पहले बहुत आसानी से दिखाई दे रहे थे, बल्कि मैं तो 220 और 230 रन भी आपसे डिस्कस कर रहा था. तो स्ट्रॉन्ग कमबैक, और यहाँ सजावल को बहुत क्रेडिट जाएगा. सजावल ने जो लास्ट ओवर किया बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर था, और सजावल ही अब आखिरी ओवर करने के लिए आए. खासा लेट लाए इन्हें. तो अगर थोड़ा सा, लेकिन हो सकते हैं कुछ बॉलर नाकाम हो जाते हैं किसी दिन, नेक्स्ट डे वो परफॉर्म करते हैं. अताउर रहमान सामना करेंगे, और इस बार जबरदस्त हिट यहाँ कैप्टन अताउर रहमान की. 6 रन हासिल हुए यहाँ अटैकिंग इस्लामाबाद टाइगर्स को. Yeah, welcome to the bowling crease for closing over, says the captain. Sajawal, who bowled a brilliant over when he was taken out of the attack. Maybe it was the plan for Lahore that he will bowl the last over, and he's been greeted with a brilliant 6 by Atta, the captain of Islamabad Tigers. एक और जोरदार कनेक्शन. Attacking Islamabad Tigers in full flow because of his captain Ataur Rahman. 2 consecutive sixes. Well, one thing is for sure, Naseem, when the ball hits middle of his bat, we are in business here in the com box, because it is going to travel the distance. He's a big hitter, he's muscularly built, and he's a powerful man, and he's making use of the power to great extent now. And a strong comeback by Sajawal. This time Yorker length and deceived the batsman. In falling over on his follow-through shows that how much effort he's putting into his deliveries. This is good to see from a bowling perspective, giving his 100%. It was a brilliant swinging Yorker coming into the right-hander. एक और बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर. तारीफ करना पड़ेगी सजावल की. 2 कंसेक्यूटिव छक्कों के बाद 2 डॉट बॉल्स, स्ट्रॉन्ग कमबैक, और यही होना चाहिए. गिव अप नहीं करना चाहिए. ठीक है, 2 छक्के लगे, और ये जो 2 डॉट बॉल है उन्होंने खासी हद तक बैलेंस किया.
You're right, Naseem. You never have to lose hope. Keep trying. दो बॉलें रह गई हैं, इनिंग जल्दी खत्म कर दो बॉलें तो देनी पड़ेगी आपको, कम बोल इनिंग खत्म। इस बार ऑन साइड की जानिब खेलकर 2 रन हासिल किया था रहमान ने। The skipper will face the last ball of the innings. Full toss, drilled hard down the ground, but it's only going to be one. So single to end the innings. It's 209 which they have posted, a mammoth total, and the target of 210 for Lahore boys. It's going to be a tough ask. बहुत ही जबरदस्त बैटिंग यहाँ कैप्टन अताउर रहमान की जानिब से, बहुत ही अच्छा फिनिश किया इस ओवर में, 2 छक्के लगाए। एक्सपेंसिव ओवर रहा थोड़ा सा उसामा का, लेकिन पहले 2 छक्कों के बाद उसामा का स्ट्रॉन्ग कमबैक। एक मुश्किल टारगेट होगा यहाँ पर लाहौर लायंस के लिए, लेकिन उनके यंग बैट्समैनों को देखना है किस तरह इस टारगेट को चेस करने जाते हैं।
was talking about the non-identified flying object. It's called drone camera. Beautiful coverage of this MAQ TV. It's a MAQ TV production live all the way from MAQ Cricket Ground, Hafizabad. MCL Season 3 is going on. End of the over, end of the ball play. It's 59 for 2. 2 विकेट गिर चुकी हैं अब तक। लाहौर की 59 रन हो चुके हैं। 210 रन जो है चेस कर रहे हैं। ये बैटर्स किस तरह से कहां तक ये पार्टनरशिप लेके जाते हैं और ये टारगेट चेस करते हैं। Looks as if it's going to be some air to continue from the pavilion end. Didn't time to his liking, but still will take a single. Wants the second, but his partner is not interested, and rightly so, because it was a good throw. अच्छी फील्ड प्लेसिंग ली हुई है बॉलर्स ने। बड़े रिलैक्स नजर आ रहे हैं क्योंकि रन इतने किए हुए हैं। कोशिश हो रही है इस्लामाबाद टाइगर्स के कैप्टन की के फील्ड प्लेसिंग अपनी देखें और बॉलर्स को वहीं पर ही बॉल करवाएं जहां पर रिक्वायरमेंट है। बॉलर्स एंड फील्डर्स 4-5 फील्डर्स ऑफ साइड पे खड़े हैं, 4 ऑन साइड पे। Down the ground and through the gap. This will win the race in the end, yes. Quickly across the fence for 4, beautifully timed through extra cover. अच्छा शॉट खेला ये, कदमों को इस्तेमाल करते हुए मिडल ऑफ द बैट बिटवीन मिड ऑफ और एक्स्ट्रा सर्कल के दरमियान से गैप से ये बॉल गई क्योंकि मिड ऑफ सर्कल में थे। भरपूर फायदा उठाया बैटर्स ने शॉट को खेलने का। Well, it was a brilliant stroke in a way that he's played it on the up. It wasn't a half volley. This time pulled away, but there is a protection at deep square leg boundary. It's going to be one only. Well, in between this over, now we see that the medium fast bowler is operating. We saw the batter asking for a helmet, which is a good habit. I like it because helmet is a necessary equipment, I would say, because I still remember Shoaib Malik was batting even against the spinners without a helmet, even without a cap, and a throw from Colin Munro came and hit straight on his head, on Shoaib Malik's head, and ricocheted off his head to the boundary for 4. You can observe how quickly that ball was thrown by Munro. And in the end, it was a kind of 4 weeks rest for Shoaib Malik at the end. Protection is very important about that hard ball cricket, you know. So they are all equipments required for the people. Doesn't matter if bowling is spin or fast. Yeah, precautions, safety precautions need to be care of intelligently in cricket ball. ये वो चेंज ऑफ पेस है बॉलर्स का जहां पर बॉल की थोड़ा सा स्लो वन बॉल किया और उसको लेग स्टंप पे खेले जा रहे थे, कोई रन हासिल नहीं किया। 210 रन लाहौर ने चेस करने हैं। इस्लामाबाद टाइगर्स के बॉलर्स वेरिएशन से बॉल करते हैं इस पिच पे, जहां पर स्लो मूवमेंट नजर आ रही है वहां पर बॉल कर रहे हैं और डॉट बॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बॉल लेग स्टंप पे था, ये 4 रन हासिल किए। बड़ा सा रीड किया इसको लेग स्टंप पे, डीप स्क्वायर लेग पे 4 रन। Beautifully played, nicely executed pull shot. As soon as you get the ball over that short fine leg, you're going to get a boundary. 8 overs done, it's 70 for 2. दो विकेट्स ले चुकी हैं अभी लाहौर की। जिस तरह से बॉलिंग में चेंजेस कर रहे हैं यहां पर, एक बाउंड्री लाहौर के बैटर्स को मिल रही है, अदरवाइज 9 से 10 रन का एवरेज बरकरार होगा लाहौर के बैटर्स को। लेफ्ट आर्म स्पिनर कॉलिजन की जानिब से फील्ड सर्क करते हुए एक्स्ट्रा कवर पे एक्स्ट्रा कवर बैकफुट पॉइंट
थर्ड मैन 5 फील्डर ऑफ साइड पे लिए हैं। अच्छा बॉल टर्न हुआ, ये फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया, बैकफुट पे खेलने जा रहे थे, इसको चिप करना चाह रहे थे थर्ड मैन की तरफ, मगर बीट हुए। अच्छी बॉलिंग। This time it's launched, and it's launched big. It's going to clear the fence. They need more of these. A timely blow. अच्छा शॉट खेला, ये ऑफ स्टंप पे थोड़ा सा बॉल था, खिंचा हुआ बॉल था, ये लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, T20 पे बड़ा अच्छा शॉट, मिडल हुआ, 6 रन हासिल किए लाहौर के बैटर्स ने। ये वो लाइन है जहां पर कीपर ने अपील की और बीट हुए, खड़े खड़े खेले इस बॉल को, वापस अपनी लाइन टू लाइन पे आए बॉलर्स, जहां पर उन्होंने पोइस्ट का खाने से पहले लास्ट बॉल की थी, जहां पर हेल्प भी मिल रही है, टर्न भी हो रहा है बॉल, अच्छी स्टडी, वापस कम बैक किया बॉलर्स ने 6 रन खाने के बाद। वाइट बॉल देखनी होगी, अंपायर को इशारा, यकीनन वाइट बॉल, काफी तेज बॉल की थी, आम बॉल की, आउटसाइड ऑफ स्टंप, अच्छा कैप किया विकेट कीपर ने अगेन। Yeah, tried a quicker one, but lost his lineup control in the process. Well, Hassan, you spent most of your life in Karachi. This time it's launched, and oh my word! He's made a mess of it, did the fielder, and pushed the ball across the fence for 4. Where should have been a wicket, there is a boundary. पूरा कनेक्ट नहीं किया, ये लॉन्ग ऑन की तरफ, मुझे लगता है फील्डर को ये बॉल नजर नहीं आई, ये बैटर्स कहां खेल रहे हैं शॉट, थोड़ा सा स्लो नजर आया रनिंग में, डीप मिड के दरमियान खड़े हुए थे और लॉन्ग ऑन से स्ट्रेट भागते हुए आए, ट्राई भी किया, मिस फील्ड हुई, 4 रन हासिल की, थोड़ा स्ट्रेट किया है बॉलर्स ने इनको। अगली बॉल कहां करते हैं बैटर्स को, अच्छा बॉल स्पिन हुआ, खड़े खड़े खेले इस बॉल को, थर्ड मैन की जानिब ये बॉल किया है, 4 रन हासिल किए। देखना ये है कि लेग बैक का इशारा अंपायर की तरफ से, बैक टू बैक सेकंड बाउंड्री हासिल की लाहौर के बैटर्स ने। And throughout the day, up till now, no batter have got out leg before wicket. So this is today's information. So I was asking you, Hassan, that you spent your time predominantly in Karachi. Actually, you've been across the globe everywhere when you used to play for Pakistan and used to play county cricket in particular. And now you're running an academy in Islamabad, Naval Anchorage HRCA. I visited that academy too. So I want to ask you something, that what have you observed coming in Hafizabad? What you like from Hafizabad coming over here? The MCL Major Cricket League here, that's why I'm here coming to supervise this tournament here in Hafizabad, especially talent program. So looking forward to these kind of players, good performer, given the chance for the out of country Pakistan, who took 5 wickets, who took batsmen, who took 100 runs in T20 format. That is a charm for T20 format. So that's why we talent program, looking forward to the giving chance to the people who play for grassroots level in Pakistan. Yeah, it's a very good effort, and it's 9 overs done, 85 for 2. Down the track, and the ball just got big on him. Gets beaten altogether. He was trying to play that extravagant drive through the extra cover region. I'll tell you one thing, Falak, you know, MAQ he used to play for cricket in America as well. Still he play for MAQ Wetlands cricket in America, Florida. So this kind of aggression about cricket, you know how much he's loved to play cricket. We definitely appreciate the efforts of the great man Matt Qureshi, and it's a very good information for me that he's still playing veteran way back in the USA, actually in Florida. Yeah, in Florida. Actually, he's constructed a beautiful ground over there as well, Broward County Stadium, Yeah. where the international cricket is being played.
given to chance for the youngsters and play himself in Veterans Cricket in America, US Cricket Council. And all Caribbean Premier Leagues, they're playing for participate in US Cricket Council. And they love to play cricket. And we know as DJ Bravo, Cam Pollard, they're all coming all the way to West Indies. They're playing from US Cricket Council there. Yeah, actually, his efforts are just non-stop, in my opinion, starting from 99, the T20 League, the first US T20 League, which was MAQ T20, was held in way back 2008. In that league, actually, I've been told that the great players from all across the globe White ball, umpire का इशारा again. थोड़ी out और फिर जाके ball की outside off stump और white ball का इशारा किया. That is the thing for like in Shoaib Akhtar 2012 they play US Cricket Council as well, and all struggle team they are champion against Caribbean players. Yeah, in the T20, coming back to that point, what I was telling you, that in 2008, I've been told that the great players like Sir Clive Lloyd, like Javed Mirdad, Faisal Iqbal, Azharuddin from India. And Ricardo Paola also, he took 100 runs against Pakistan in 1998. In Sarah Cup Canada, he also played for US Cricket Council. Adam Sansford, right arm fast bowler. So many players they are participating in US Cricket Council. Straight drive, short खेला. बड़ा बैक ड्राइव पे शॉट खेला, रन आउट हुए हैं लाहौर के बैटर्स. ये अनलकी रहे, सीधा शॉट खेलना चाह रहे थे और ये विकेट चौथी विकेट गिरी है लाहौर की. You hit the ball straight, but not that straight, to your own curse. Oh, he's lost his partner. There was a little bit of fingertip from the bowler, and the ball hit the stumps. And the non-striker had no chance to get back. Probably the most unfortunate way to get out. बिल्कुल बहुत अनफॉर्चुनेटली होता है ये, और सुसाइड, लुक लाइक सुसाइड, बट ट्राई करते हैं क्रीज पे आने के लिए, कोशिश करते हैं स्ट्राइक एंड पे, मगर वेरी वेरी अनलकी दिस काइंड ऑफ डिसीजंस. सेट बैट्समैन खेल रहे थे, बासित बड़े अच्छे प्लेयर्स थे, सेट बैट्समैन थे, वो खेल रहे थे और अभी सेटल ही हुए थे कि स्टिल रन आउट हुए. बॉलर बैक ड्राइव पे न्यू बैटर्स लाहौर की तरफ से फैसल भट्टी आने वाले बैट्समैन में 210 रन का टारगेट चेस कर रहे हैं लाहौर के बैटर्स को. जिस तरह से फील्डिंग में जान मार रहे हैं आज नजर आ रही है एनर्जी इस्लामाबाद टाइगर्स की. यकीनन काफी कॉन्फिडेंट होते हैं जब भी हमेशा T20 फॉर्मेट में इतने सारे रन हो, मगर नेवर इजी. एक पार्टनरशिप लगती है तो गेम का चेंज, मैच का चेंज हो सकता है गेम. बॉलिंग रनर पे प्रॉब्लम हुई कॉलेज जाने से बॉलर्स को. अंपायर का इशारा टैप बॉल, क्योंकि कोई बॉल डिलीवर नहीं हुआ यहां. There was a little bit of issue with the side screen, sorted out now. जितने भी प्लेयर्स जो है वो लोग बैठे हैं स्क्रीन से हट जाएं साइड पे प्लीज. तीन प्लेयर्स सर्कल में खड़े हुए हैं और अंपायर की अच्छी जजमेंट, फ्रंट अंपायर्स, न सिर्फ लेग अंपायर्स ने ये नो बॉल दिया है. Yeah, it's good umpiring. चार प्लेयर्स आपको सर्कल में रखने जरूरी है. रिस्ट्रिक्शन जो है वो अंपायर्स की तरफ से भी है और टूर्नामेंट के रूल रेगुलेशन के मुताबिक भी फ्री हो गई है, जिस तरह से ये मिस्टेक की गई है कैप्टन की तरफ से. Yeah, it was good judgment by the umpires.
Can you believe that? This kind of misfield is not expected at any level, even at school level. Straight through, and it goes straight through. Falak, have you seen this fielding? When fielding Jonty Rhodes, world class fielder. I never seen him before. He missed the ball, he missed the catch as well. Back foot point. Remember Islamabad run out in 1992. Yeah, and the history was repeated when Herschel Gibbs ran Inzamam out in the same fashion. अच्छी बाउंड्री, इसको फ्लिक किया इलेक्शन से, 4 रन हासिल किए इन स्विंग बॉल की, इसको टाइम करते हुए सर्कल के अंदर दो फील्डर फाइन लेग पे 4 रन हासिल किए लाहौर के बैटर्स ने. Well, it has been talking about the fielding, one part where Pakistan have lacked a lot, but there have been quite a few names who are good in the fielding department. Take a look at Ijaz Ahmed. He was a great fielder. Imran Nazir. Shoaib Malik too was a good fielder. So many fielders in Pakistan who become coming to the Pakistan team as a fielder. Then they improve with batting and bowling as well. Single liga ek extra cover pe. So catches win the matches. That's why we are saying every day, every time, if you field are good, you are fit perfect to bat and bowl. And don't forget nowadays Shadab Khan. He's a gun fielder, one of the best in the world when it comes to the fielding department. Mohammad Rizwan was a very good fielder too. That's why he's been given the responsibility of keeping wickets. शॉट खेलना चाहते थे, मिड ऑन ऊपर है सर्कल में और वन बाउंस फील्डर ने पिक किया बॉल को, स्टंप्स को थ्रो किया मगर बैट्समैन क्रीज पे मौजूद थे, कोई रन हासिल नहीं किया. लंबे हिट करना चाहते थे, दो फील्डर्स लॉन्ग ऑन और मिड शॉट सर्कल में हैं और ट्राई कर रहे हैं कि स्ट्राइक विकेट करें ज्यादा से ज्यादा लाहौर के बैटर्स. Nicely bowled, a Yorker. Right in the block hole. Actually, in my opinion, it's been a very good display earlier with the bat and now with the ball by Islamabad Tigers. On the other hand, Lahore needs to do something out of the box, something out of the ordinary, something extraordinary to make a match of it. Nicely bowled and well managed in the end. Fumble in the field, but it doesn't cost any run. Good recovery by the fielder in the end. That's the end of the over. It's 99 for 3 after 11. So it's the third edition of the MCL Major Cricket League here in Hafizabad, Pakistan. And now it has become T20. The first two editions were the T10 editions. The first edition was in 2021. That was played here in the same ground in Hafizabad. And the second edition was played in Hyderabad. And the fourth edition is also around the corner, maybe in November. Thump down the ground and that will reach the fence in no time. Brilliantly stroked. Straight down the ground, straight as you like. अच्छा शॉट खेला लॉन्गों की तरफ से बैटर्स ने भरपूर स्ट्रोक्स की जरूरत है. 210 रन चाहिए लाहौर को ये मैच जीतने के लिए. स्लो वन बॉल किया, ये रन लेना चाहते थे स्ट्राइक एंड पे मगर
उनको मना किया बैटर्स ने जो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और कोशिश कर रहे थे कि इसको एक्स्ट्रा कवर की तरफ से ऊपर से खेलूं, मगर थोड़ा सा लो रहा ये बॉल। शॉट बैकफुट पॉइंट पे खेला, ये 4 रन हासिल किए। बॉटम पे शॉट लगा था, अच्छा शॉट खेला, 4 रन। जब आएंगे हिला के रख देंगे, खेल वो दिखाएंगे, फानी बन के स्टालियंस उठेंगे, जीतेंगे बाजी सबको। This time a big swing of the bat, but no connection whatsoever. The ball before, he's hit that very hard, got almost the toe end of the bat, but luckily for him, the ball went in the gap and quickly across the fence. These are short boundaries actually, not more than 60 meters. This is what I'm observing from here. And it's been a batting friendly environment in my opinion. Inside half of the bat, it was in the air for a while, but down to long on after a couple of bounces. Hassan Ali is the bowler operating from the media centre end. This looked like Hassan Ali. Action. शॉट खेलना चाहते थे, इनसाइड आउट, लॉन्ग ऑफ की तरफ सिंगल हासिल किया। थोड़ा अच्छे जो पेस किया बॉल को यहां पर। Twelve overs been bowled. It's 109 for 3. 12 में 109 रन, लाहौर के 210 रन का टारगेट है। इस मैच में दोनों बैट्समैन लाहौर के स्ट्राइक रेट करते हुए प्रीवियस ओवर में बैकफुट पॉइंट पे 4 रन हासिल किए। कॉलेज एंड से बॉलर सबसे पहला बॉल करेंगे ओवर का। आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल है ये, अंपायर का इशारा देखना होगा। ये वाइड बॉल, चेंज ऑफ पेस से किया, स्लो बाउंस बॉल आया ये और कट करना चाहते हैं जिसको आउटसाइड ऑफ स्टंप। कोई रन हासिल नहीं किया, मगर बैट से लगती तो यकीन 4 रन होते, मगर बहुत दूर था ये। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। Well, they need another 100 of 8 overs. It's a doable job with 7 wickets in hand. And you need some luck as well. That was in the air and away from the fieldsman. Because when you go hard at the bowling, then you provide the opposition with every chance to get you out as well. So they have to be consistent in their approach, and they have to rely on their timing and try to play genuine, pure cricketers. इसलिए लॉन्ग ऑन और मिड विकेट सर्कल में लंबे हिट खेलना चाहते थे, मगर मिस हिट हुई और 2 रन हासिल किए बैटर्स ने। Well, at one stage I thought that ball was going to go across the fence, but it was not as timed as we thought. But still they managed to pick up 2. Now there is a little bit of problem with the gloves, I think, or yeah, the bail's been removed as well because of the breeze, the strong breeze is blowing across the field.
शॉट खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑन की तरफ स्ट्रेट मगर एक रन हासिल किया। थोड़ी सी मिसहिट हुई, कोई लंबी हिट अब तक नहीं लगने में आई और कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर के बैटर्स किसी तरह से 6 या 4 रन हासिल करते रहे हर ओवर में। स्ट्राइक रेट बढ़ता हुआ, रन रेट बढ़ता हुआ लाहौर का। शॉर्ट बॉल थी ये, खेलने गए, पुल कर रहे थे इसको, लाहौर पे काफी दूर तक बॉल से ट्राई करी, एक रन हासिल किया। Well, actually, it was a tough chance for the fielder running backwards, but he's got there in the end, but just couldn't quite grab the ball. Crossed it in the end. I would say that was a drop chance. Yeah, that is a drop chance. But very wider, that fielder long on side. He'd run away to the far away from offside. Drop the catch. शॉट, 4 रन हासिल किए। अच्छा शॉट था ये, फ्लिक किया इसको की तरफ से 4 रन हासिल किए। यही बोलना चाहिए, अगर 210 रन है तो यहाँ बैटर्स को तेजी दिखानी पड़ेगी और शॉट खेलने पड़ेंगे। इनके आगे रहेगा हर कोई। Arsenal to continue. 13 overs bowled. It's 120 for 3. 7 overs to go. Another 90 runs required by Lahore Lions. And at the same time, I will proudly welcome Naseem Rajput in the box. थैंक यू वेरी मच। और अब तक अगर हम देखते हैं तो फिर डोमिनेट किया है, लेकिन अच्छा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई हमने देखा लाहौर लायंस की जानिब से। और एक और जबरदस्त स्ट्रोक, गैप बनाने में कामयाब हुए, 4 रन हासिल किए। शानदार बैटिंग किसमें कितना है छुड़ाएंगे, के दिखा सर की बासी लगा देंगे, ऐसा खेलेंगे। Hafizabad was the batter on that occasion. और फैसल भट्टी ने अब बाहर निकल के हिट मारने की कोशिश की, फील्डर गेंद को कनेक्ट नहीं कर सके। 4 रन हासिल हुए, बैक टू बैक फ्रॉम द कैप्टन ऑफ लाहौर लायंस। Yeah, it's been a brilliant display of batting so far. Back-to-back boundaries. This is good batting, good intelligent batting. They've got 7 wickets in hand, and this is quite a doable job. Big swing and a miss, and that one beats everyone. In fact, it's into the boundary for 4. This is the last thing Islamabad Tiger needed in this over. Hassan Ali has been taken to the cleaners. बिल्कुल, यहाँ पर बाई का चौका मिला, ये बहुत ही क्रूशल रन्स है। उससे पहले भी अटेम्प्ट किया था फील्डर ने, थोड़ा दूर था कैच। इस बार बोल्ड कर दिया, शानदार कामयाबी यहां अता किंग इस्लामाबाद टाइगर को हासिल हुई। ये 5वां नुकसान लाहौर लायंस की टीम को उठाना पड़ा। फैसल भट्टी टीम के कैप्टन बोल्ड हुए। Yeah, great comeback by Hassan Ali after 3 consecutive boundaries. Right in the block hole, perfect yorker, and got his man.
Hafizabad, who was starting to look dangerous, is back now. Out for 27. Well made 27, but he's gone now. New batter name बताएं. कैप्टन फैसल भट्टी के आउट होने के बाद नवीद बैटिंग के लिए आए लाहौर लायंस के लिए. मुश्किल हदफ है इस वक्त लायंस के लिए, क्योंकि 209 रन स्कोर किए थे इस्लामाबाद टाइगर्स ने आज इस मैच में. Play and a miss. Another dot delivery to end the over. 14 done. It's 132 for 4 now. थोड़ा सा मैच मुश्किल हुआ है, नामुमकिन नहीं हुआ. मुश्किल जरूर हुआ, नामुमकिन नहीं है. और जिस तरह का पिच आज खेला है तो बैट्समैनों के रन्स यहाँ पे बहुत काउंट किए हैं अब तक. हमने देखा चाहे कराची शार्क और हैदराबाद जैगवार्स का मैच हो, या आज हम जिस तरीके से टाइगर और लायंस की फाइट देख रहे हैं, तो बैटिंग डोमिनेट की है आज. And definitely. And the credit goes to the ground staff. And here is another example of the domination of the batting. This one launched high, long, wide and handsome. Another maximum. मुकाबला तगड़ा जारी है. जो इम्पोर्टेंट चीज है फलक, And definitely. And the credit goes to the ground staff. And here is स्ट्रॉन्ग टीम हमें दिखाई दी यहाँ अटैकिंग इस्लामाबाद टाइगर्स, लेकिन लायंस की तरह रिप्लाई किया अब तक लाहौर लायंस ने. Yeah, they never looked back even after losing wickets. They kept on playing their strokes, and this is the way to go about it. Because to chase mammoth totals like this, you have to keep on going for the shots. You have to play your natural game regardless of the situation of the fact. Actually, they've played positive cricket and they've played natural cricket. That's why now they are in the game with every chance to surprise Islamabad. बिल्कुल पिचेस विकेट्स गिरी, इसके बावजूद भी मोमेंटम नहीं टूटने दिया, जो अच्छी चीज है. दोनों बैट्समैन सेंसिबल अप्रोच के साथ बैटिंग कर रहे हैं. 12 रन्स की तकरीबन अब भी औसत उन्हें दरकार है इस मैच में फतह के लिए, जो ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है. It's all about momentums and the rhythms. शानदार स्ट्रोक, गैप बनाने में कामयाब हुए, 4 रन हासिल किए. A good sensible approach from Lahore Lions batters. Well, you see lusty blows when the batters put their foot down and launch the ball over mid-wicket or square leg for the maxis. How about that for a delicate touch? ब्यूटीफुल स्ट्रोक, शानदार अंदाज से गेंद को गाइड किया, शॉर्ट थर्ड मैन और गली के दरमियान से 4 रन हासिल किए. इस बार ऑप्शन से खासी बार गेंद, अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल. प्रेशर थोड़ा क्रिएट किया यहां लायंस ने. Yeah, it's not all about slogging or hitting, I would say. You can get runs by playing pure cricketing strokes as well. Nicely played with soft hands for another run. Good intelligent batting. After boundary, getting a single, getting to the other end and letting his partner do the rest of the job. एक छक्का एक चौका ऑलरेडी इस ओवर में आ गया, तो अब जो रन रेट दरकार है उसके मुताबिक खेल रहे. इस दफा लकी रहे बैट्समैन कि गेंद विकेटों को नहीं छुआ, वरना ये नुकसान एक और हो सकता था यहाँ फलक.
15 overs bowled meanwhile, and it's 146 for 4. Another 64 runs required by Lahore in the remaining 5 overs. 13 legitimate deliveries. बिल्कुल मुश्किल टास्क है, इसमें कोई शुबा नहीं है, क्योंकि 4 विकेट गवा चुके हैं, लेकिन अब भी मैच में है जिस तरह की सिचुएशन रही है, और ये ओवर बहुत क्रूशल होगा क्योंकि थोड़ा स्पिनर्स को चेंज किया है यहाँ अताउर रहमान कैप्टन अटैकिंग इस्लामाबाद टाइगर्स ने। गुड बॉल, बहुत ही अच्छी लेंथ पर ये गेंद किया था, तकरीबन यॉर्कर लेंथ पर गेंद था, जिसे संभल के खेलना बहुत जरूरी था। अच्छे अंदाज से लॉन्ग ऑन की जानिब खेलकर 1 रन हासिल किया। Yeah, good approach by the bowler, starting with the full delivery, searching for the Yorker, and this is what you need to do in the late overs. Another full delivery, not timed as he would have liked, only single managed by the batter. ऑन साइड की जानिब खेलकर 1 ही रन हासिल कर पाएंगे यहाँ बैट्समैन। अच्छी लेंथ पर बॉलिंग की है, और वो जो एक मोमेंटम मिला हुआ था लायंस को, उसको काफी हद तक ब्रेक करने में कामयाब हुए यहाँ टाइगर्स। Just let the batter go after you and see what happens. बिल्कुल, अब तक बहुत ही अच्छी लेंथ पर बॉलिंग की, आपने सही बात कही। अपनी लेंथ को बहुत चेंज भी किया, यॉर्कर लेंथ पे भी की, शॉर्ट ऑफ लेंथ भी की, बैट्समैन को जज करके गेंद की, जिसकी वजह से अब तक सक्सेसफुल है। Yeah, the last one was a shorter one. Usman is the bowler operating from the pavilion end. इस बार अच्छी गेंद थी उस्मान की, बहुत ही अच्छी लेंथ पर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद की थी, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा रहती हुई गेंद विकेट कीपर और शॉर्ट थर्ड मैन के दरमियान से बाउंड्री के बाहर गई। मच नीडेड बाउंड्री फॉर लाहौर लायंस। And overcompensating the bowler, I think tried a little too hard. It was a low full toss in the end, got toe end of the bat and safely in the gap for 4. End of the over, 16 done. It's 156 for 4. $54 required on 24. इक्वेशन अब और मुश्किल हुई इस लास्ट ओवर में, लेकिन अगर इस तरह खेलते रहे तो फिर इक्वेशन और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कैच आउट हुए, जो सबसे बड़ी बाउंड्री है उस जाने हिट मारने की कोशिश की और बाउंड्री पे कैच आउट हुए। इस तरीके से 5वां नुकसान लाहौर लायंस का। Yeah, didn't get out of the screws and chose the longest part of the ground, but couldn't clear it, and now he's a goner. So they lose another wicket. Half of the side is back in the pavilion now, and looks as if it's going to be Daniel who's making his way in the center, or अमीर हमजा और बासित से बहुत उम्मीदें थी, और ये दोनों बहुत इस वक्त सर्किट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन है बासित, जो कजन है बाबर आजम और उमर अकमल और कामरान अकमल के, बहुत तेजी के साथ इंप्रूव कर रहे हैं। अमीर हमजा अभी हाल ही में पाकिस्तान अंडर 19 खेले। आज बासित के जल्दी आउट होने की वजह से भी खासी दुश्वारी हुई लाहौर लायंस को। quite a few names playing in this league. Quite a few players from the cricketing families participating in this beautiful
MCL Season 3. Now the situation is becoming more difficult with every delivery passing. और इससे एक और विकेट गिर गई यहां, स्टंप हुए। लाहौर लायंस की मुश्किलात बढ़ती हुई। हसनैन आउट हुए। ये 7वां नुकसान उठाना पड़ा है लाहौर लायंस को और अब उम्मीदें बिल्कुल दम तोड़ती हुई 6ठा नुकसान उठाना पड़ा है। तो अब उम्मीदें जो है वो खासी दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है लाहौर लायंस की। एक बड़ा हदफ था, एक रन्स का भी प्रेशर होता है फलक, जो पहले बैटिंग करके 209 रन्स बोर्ड पे सजाए, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। हम बात कर रहे थे कि 225-30 भी हो सकता था, तो तकरीबन 20 रन शॉर्ट रहे वो जिस तरह खेल रहे थे, लेकिन 200 and 209 का अपना एक प्रेशर है। Yeah, definitely. Everything above 200 is a big ask, and pressure of the scoreboard probably got better of the Lahore boys for the moment. This is what it is looking like. They always used to say that when you chase huge totals like this, please, as a player, don't look at the scoreboards. This is what the coaches will tell you, but it's very hard to do in the middle. बिल्कुल सही बात है, मिडिल में परफॉर्म करना एक अलग चीज है, इसमें कोई शुबा नहीं है। अच्छी कोचिंग भी इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन ग्राउंड में आपने ही करना है फलक, परफॉर्म तो आप ही नहीं करना है। बैट आपके हाथ में या बॉल आपके हाथ में। Soft hands down towards Cal corner, managing a single. The left-hander will keep the strike for the next over. 17 done. It's 159 for 6 now. अपनी गलतियों से टीमें सीखती हैं। मेरे ख्याल है लाहौर लायंस ने भी काफी कुछ सीखा होगा अपनी मिस्टेक्स से, खासकर उनके दोनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन, उनकी बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे अमीर हमजा की बात कर लें, बासित की बात कर लें, ये दोनों इस वक्त सर्किट में परफॉर्म कर रहे हैं, तो टीम को लेके चलना इन दोनों की बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। I think they missed the firepower in the late middle order actually, because the late middle order has not been able to provide them with something substantial. ऑन साइड की जानिब खेल कर 4 रन हासिल किए यहाँ दानियाल ने। Yeah, brilliantly executed that stroke, squeezed away on the onside, off the toes into the boundary. Timing was brilliant on that occasion by the left-hander. They need more of these. Just keep going, boys. Can't afford to stop. एक और डॉट बॉल, एक डॉट बॉल मजीद परेशानियां बढ़ा रही है यहां लाहौर लायंस की। Slow one, and this time it's been hit in the air. Oh, there's a drop. The catch has been put down. It was an easy chance for the fielder at mid-wicket boundary, but he's grossed it in the end. उस्मान अनलकी रहे यहाँ पर, उन्हें ये विकेट मिल गई थी। फील्डर भी गेंद तक पहुंच गए थे, लेकिन कैच ड्रॉप होते। एफर्ट अच्छे थे, बॉल तक पहुंचे बहुत अच्छे अंदाज से थे। Yeah, everything was right about that catch, but the only thing was missing was the grab, which he couldn't do that. And this is what it will count. एक और बड़ी हिट इस बार गैप में मारने में कामयाब। 4 रन हासिल किए दानियाल ने इस हिट पर।
Yeah, he's managed to got the ball in the gap this time, did Daniel. He's trying this shot almost every time. And this is one way to go about the job now, because they have no any other option, the boys from Lahore, rather than going after the bowling at this stage to make a match of it. Otherwise, they're out of it, in my opinion. End of the over, 18 done. 170 for 6 now. Another 40 runs required by Lahore in the remaining 2 overs. अब 20 की औसत दरकार है आखिरी 2 ओवर्स में. 20 रन्स पर ओवर अगर ये खेलते हैं तो उसी सूरत में ये मैच जीतने में कामयाब होंगे, और बहुत मुश्किलात अब बढ़ गई हैं यहां पर. अच्छी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस हमें दिखाई दी अता किंग इस्लामाबाद टाइगर्स की जानिब से. Left-hander Daniel is going to be on strike, and he has to do something out of the box. Something very rare, which he hasn't done in his career so far. इस बार बोल्ड बोल्ड नहीं हुए बल्कि गेंद उनकी बॉडी पे लगी है. Yeah, he went across the line and got hit. This will happen when you try to go big, when you try to play extraordinary strokes. It can happen to you as a batter. You have a short fine leg. Third man is back on the boundary. Square leg is deep. Mid wicket is deep. We can expect a shorter one too. अच्छी गेंद, अच्छी लेंथ पर गेंद थी. दानियाल के पास कोई जवाब नहीं था. जिस तरह फलक रात के साए जो है वो धीमे होते चले जा रहे हैं, वैसे ही अब इम्कानात भी लाहौर लायंस के कम होते चले जा रहे हैं, और अब फलक पे तारे निकलने वाले हैं. ऐसा लग रहा है कि फलक फतह जो है वो सितारों की सूरत में मिलने वाली है अब अता किंग इस्लामाबाद टाइगर्स को. Yeah, you're right. Another one is in the air, but one bounce to the fielder at a third man boundary. Another one will be added to the total. So now they need boundary almost every delivery, which is doable, but very, very tough. Big swing and a miss. They'll scamper through for a bye, but it's good bowling nevertheless. It's very tough for a bowler to maintain a good length against the left and right hand combination, and it's been a good adjustment by the bowler, I would say. You can see the umpire signaling the bye there. Umpire Shaukat belongs to Muzaffargarh, and his partner is favorite of our own, virtually, Sawabadi. इस बार आउट होने का खतरा दानियाल के, और अटेम्प्ट किया था यहां पर कैप्टन ने, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए. 1 रन हासिल हुआ यहां दानियाल को. Well, Naseem, now it's only a matter of time, because we can observe that it's getting very tough, very, very tough for the boys of Lahore with every delivery passing.
There was a shy at the stumps. Had that ball hit the stumps, I think it would have been curtains for the batter. Or has it been run out? रन आउट डायरेक्ट थ्रू लगी और रन आउट हो गए. इस तरह एक और नुकसान लाहौर लायंस को यहां उठाना पड़ा है और अब जीत यकीनी हो गई है. Well, effect of the evening is just about getting better on my eyes. I thought that ball had missed the stumps, but it was a bullseye. Good fielding. 7th wicket is down now for Lahore. इस आखिरी ओवर में अगर 6 गेंदें होती हैं तो 6 लीगल डिलीवरीज पे 6 छक्के लगाएं तो मैच सुपर ओवर में जाएगा. 37 रन दरकार हैं. एक रन का इजाफा और अब हर गेंद पर छक्का भी फतह नहीं दिला पाएगा या कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा लाहौर लायंस को. Yeah, it's been a powerful performance by Islamabad Tigers. They've been dominant throughout this match, I would say, throughout this competition. Earlier on, started brilliantly with the bat. Osama making 70 runs. Then a couple of cameos in between. This time a 6, but maybe a too little too late for Lahore's point of view, for Lahore's perspective. Only a matter of time now. It's been a very good day of cricket, nevertheless. We have seen some great batting, some good bowling in between as well, especially from the spinners. It was an action-packed day, nevertheless. Actually, we all were deprived of cricket on a positive note throughout the day, I would say. So overall, we've enjoyed today's action, today's cricket. And here we are. That's it. Islamabad Tigers comprehensively beating Lahore Lions in the second match of today. Congratulations, Islamabad. You deserve this victory because you've played like champions and you've played as a dominant side, and you were the dominant at the end of the day. But Lahore boys, they have put up a good show, I would say. They have fighted, but at the end of the day, it wasn't their day. And mostly the things went against their favor and they have lost the match. But it's a league. They have another chance. So you cannot lose hope after losing one game. You have seen something to learn for Lahore boys, I would say. But we have to appreciate the efforts of ATTA County, Islamabad Tigers. Thank you so much, everybody, for joining us live on MAQ TV. We'll join you in about few minutes time from now with the presentation ceremony. Bye bye for now.
MCL मेजर क्रिकेट लीग के फोर्थ मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत मैक क्रिकेट ग्राउंड हाफिजाबाद से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है और जबरदस्त मुकाबले यहां पर जारी हैं। इससे पहले कि किसी और चीज पर बात करें, मेरे ख्याल है आप तमाम क्रिकेटर्स क्यूरेटर के लिए बहुत सारी तालियां बजाएं कि शानदार पिच तैयार की, इसके बावजूद के पिछले 2 दिन मैचेस नहीं हो सके थे, लेकिन hats off to the curator and the management of this MCL Major Cricket League के जिन्होंने 2 दिन अनथक मेहनत के बाद इतनी शानदार पिच बनाई कि 2 मैचेस हुए और दोनों बड़े हाई स्कोरिंग मैच परफॉर्मेंसेस सामने आई। उमैर बाजवा ने 51 रन स्कोर किए 41 बॉल्स पर। राना काशिफ एक्सीलेंट बॉलिंग 4 for 25 in 4 overs, वेरी वेल बोल्ड राना साहब। इसी तरीके से हसनैन ने 46 on 32 बॉल्स। फैसल भट्टी 2 for 39, लेकिन वो बैट्समैन कि जो इब्तिदा से ही मैच को यकतरफा करने में कामयाब हुए 70 on just 28 balls with 5 fours and 7 sixes, Osama, Mr. Hassan Raza and Mr. Shabbir Ahmed Mughal, the presentation party as giving the man of the match trophy to Sama. उसामा, बहुत ही जा रहे आना थे आज आप, जिस तरीके की बैटिंग करके गए, मजा आया इस पिच पे खेल के, इस ग्राउंड पे खेल के और खासकर इस MCL में खेल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने इतना अच्छा स्टार्ट करवाया, मुझे और मेरी टीम को इज्जत से नवाजा। बस यही प्लान था कि नेचुरल खेलना है, जहाँ का बोला उधर खेलना, क्रॉस नहीं खेलना, तो इंशाल्लाह उसी में अल्लाह पाक ने कामयाब किया और उसी में अच्छा चल दिया। कैसा लग रहा है वैसे यहाँ आने के बाद, जो टीम्स खेल रही हैं, अच्छा टैलेंट दिखाई दे रहा है, फिर जो आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक टैलेंट हंट प्रोग्राम है और अब पाकिस्तान से बाहर भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, कनाडा, अमेरिका, वेस्ट इंडीज एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी बिल्कुल, ये हम जूनियर्स के लिए बहुत ही अच्छा इवेंट है और बहुत ही अच्छा ये अंपायरिंग और जो फ्रेंचाइज है बहुत ही अच्छा है, इन्होंने इकदाम किया हम जूनियर्स के लिए, और यहाँ जूनियर्स आए और पार्टिसिपेट करें और परफॉर्म करके आगे जाएं। थैंक यू वेरी मच उसामा एंड थैंक यू वेरी मच हसन रजा एंड शब्बीर अहमद मुगल साहब। तो फिर आज के दिन इतना ही, आज दोनों मुकाबले बहुत जबरदस्त हुए, कल फिर डबल हेडर है इस MCL में मेजर क्रिकेट लीग के जबरदस्त किस्म के मुकाबले, और जरूर देखें इन मुकाबलों को आप लोग भी, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी जो हमारे यंगस्टर्स को यहाँ हाफिजाबाद क्रिकेट ग्राउंड से मिली है, इसका फायदा पाकिस्तान क्रिकेट को भी होगा और स्पेशली हमारे क्रिकेटर्स को बहुत होगा कि जिनके दरवाजे अब और भी खुल जाएंगे। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ मैक क्रिकेट ग्राउंड हाफिजाबाद से आपसे चाहेगा इजाजत। कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल दैन अल्लाह निगहबान।